which is somewhat related to information, something that we can accumulate. All of us can do that. But wisdom is something totally different. Wisdom means knowledge which has been applied, which has been realized. And that is what makes the difference between a person who is wise and a person who is a novice. The wise person, he has realized this knowledge. So we have requested, and we have some very great personalities who will come and share their wisdom with us, है ना? तो आप सबने देखा ही होगा पोस्टर के अंदर we have three prominent speakers, starting with Mr. Ashray Krishnadas, who will be coming today, followed by next week, which is Mr. Ram Bhadradas and everyone's favorite Amog Leela Das ji, on 5th of February. So today's speaker, we have Mr. Ashray Krishnadas, who will be bridging the gaps between science and spirituality. If I may ask you people, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि what is your opinion about this? Are science and spirituality two parallel lines that diverge later on, or are they something that merge? क्या साइंस और स्पिरिचुअलिटी का आपस में कुछ रिलेशन है या नहीं, या आपको लगता है these are two opposite things which are going in different directions? तो okay, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं. What are your expectations from this seminar? आप लोग लिख सकते हैं चैट बॉक्स में. This will be very nice. And वैसे ही कोरोना है, सब लोग घर के अंदर बैठे हैं, रूम के अंदर अपने, और ऑलरेडी लाइफ्स आर वेरी इम्पर्सनल. सब लोग बड़े एक तरह से परेशान हैं, बोर हैं, ये सब चीज है. तो वी डू नॉट वांट टू मेक द सेशन, इसलिए हमने जूम पे रखा है. दिस इज नॉट अ वेबिनार, दिस इज अ जूम सेशन. सो वी वुड रिक्वेस्ट कि आप सब अपना कैमराज ऑन करें. लेट अस मेक इट मोर इंटरैक्टिव सो दैट वी कैन सी ईच अदर. आई डू नॉट थिंक किसी को भी अच्छा लगता होगा खाली अपने लैपटॉप से बात करने में. लैपटॉप से बात तो कोई भी कर सकता है ना, हम सब लोग रहते ही हैं एक साथ, बट दैट इज अ बिट बोरिंग, यू सी. तो लेट अस Yes, we have a few people who have only turned on their camera. We have Amit Kumar, Varun, तुषार, राकेश. तुषार, इन लोग को तो जानता ही हूँ मैं, ये सब तो पुराने लोग हैं. ये सब लोग का कैमरा ऑन किया है बस. पर सेशन ये इन लोग के लिए नहीं है, सेशन नए लोग के लिए है, सब आप लोग के लिए. They have already been through this. That is why they are hosting this. That is why they have come and they are trying to present, to share what they have learned. इसलिए तो हम एथिक्राफ्ट क्लब के थ्रू हम ये सेमिनार कर रहे हैं. तो आप लोग भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए. एंड प्लीज आप लोग लिख सकते हैं चैट बॉक्स में व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस. आप लोग क्या सोच रहे हैं, व्हाट विल हैपन टुडे, क्या आपको जानने को मिलेगा. व्हाई हैव यू कम ओवर हियर. इट इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट एक घंटा 1.5 घंटा अपना निकालना टू कम एंड हियर समथिंग. Hearing is something very difficult, you know, in this time of internet, especially when we have not YouTube but YouTube Shorts now, जहाँ पे 15 से 20 सेकंड के अंदर मैसेज इज कन्वेड एंड देन यू जस्ट स्वाइप इट, आगे बढ़ जाते हैं. इन दिस टाइम आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू पीपल कि आप सब लोग इतना टाइम निकाल के आए हैं इन ऑर्डर टू अपग्रेड योर सेल्फ. दिस इज समथिंग वेरी हार्टनिंग. तो दैट इज व्हाट, let us be a bit more interactive in that sense, है ना. और इसका बहुत अच्छे से हम फायदा उठा पाएंगे उस चीज में, बिकॉज यू नो जब कैमरा बंद हो जाता है ना, we do not know, there are multiple things that are going on behind, and then we can do a lot of things. So would anyone like to share their expectation? One person has written it is something about self etiquette. They learn about self etiquette. Okay, yes, self etiquette. और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? ठीक है. तो वी हैव आवर स्पीकर अमंगस्ट अस. तो हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन शेयर करेंगे अपने स्पीकर का, एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑन टाइम. ओके, तुषार इज राइटिंग इन today's time people are getting distracted from their path, therefore we need to have spirituality.
yes, spirituality provides you the right direction and the right focus. Okay, good. So our speaker for today, Mr. Ashray Krishnadas, he is a renowned polymath. Polymath is a person who has knowledge about everything, who's an expert in things. So you can ask him any kind of question pertaining to anything, and you'll get your answer. He's a renowned polymath. He's a youth coach and leadership expert. He has in-depth knowledge about the variety of topics ranging from spirituality, marketing, creative writing, strategy, video production, graphics, designing, etc. तो हमको एक्चुअली मिला नहीं इनसे अच्छा व्यक्ति जो ये पर्टिकुलर टॉपिक साइंस और स्पिरिचुअलिटी को बता सके अच्छे से. Our speaker was born and brought up in Delhi और उन्होंने अपना बीटेक कंप्लीट किया था हैमिल्टन यूनिवर्सिटी से और उसके बाद since the past 12 years he has been working continuously in this particular field, spirituality and bridging the gaps between the lives of people and to train them and to coach them so that they can live a better life themselves. He's a leadership trainer and strategist at IYF Delhi. He's also known for his amazing course design and course development. और इन्होंने बहुत सारे कोर्सेज और मॉड्यूल्स बनाए हैं जो हमको बहुत ही लॉजिकल, साइंटिफिक और सिस्टमैटिक अप्रोच देते हैं टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी एंड इन एसेंस टू अंडरस्टैंड लाइफ इटसेल्फ. इनके लेक्चर्स में आपको सुनने को मिलेगा सम टोटली आउट ऑफ द बॉक्स इनसाइट्स अबाउट वैदिक स्क्रिप्चर्स और उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. सो दिस इज समथिंग व्हिच वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम आगे तो ये जो 3 सेशन का कोर्स है, जो हम 3 सेशन का लाइव मास्टर क्लासेस कर रहे हैं, दिस इज नॉट जस्ट इट, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड ऑफ आवर जर्नी टुगेदर. इसके बाद हम विल डू मेनी सेमिनार्स और उसके अंदर विल आल्सो डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स पर्टेनिंग टू दिस जो हमारे स्पीकर ने डिजाइन करे हैं. इट इज अबाउट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भगवद गीता एंड हाउ इट हेल्प्स अस टू डील विद डेली लाइफ प्रॉब्लम्स. तो विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम, let us get started with today's discussion and we welcome our speaker, Mr. Ashray Krishnadas. Thank you very much, sir, for taking out your time and coming. Hello, thank you. Welcome all. So I would like to share my presentation. Can you give permission? Do you have it now? Yeah. So one who knows everything is a little high claim to make. But yeah, actually, if you grow in life, as you grow in your life, you cannot help but you have to become, everyone has to become polymath. Polymath is someone who can, in order to solve a problem, can derive insights from various fields of knowledge. And life's problems, challenges, situations are not related to a single academic field, as we are generally accustomed to solve problems in our schools and colleges. है ना, जैसे पूछते ना कि what are you in what branch you are, so you'll say I'm in science. So they will give you problems to solve related to science. They will give you a problem to solve related to maths. But in real life, when you enter in real life after school and college, you will find that the knowledge of one field is not sufficient to solve the problems. So in one sense, yes, everyone has to become polymath. And that one of the aspects of knowledge, very important branch of knowledge, is spirituality, for which we do not have any academic institution or you can say a formal education system around it, although it is one of the most important field of knowledge. So therefore, it's good that you all have gathered here today to hear about this topic, because generally there are lot of misconceptions also regarding this topic, and therefore it becomes very important. Generally, there are many misconceptions, and sometimes what happens
कि whenever someone faces some doubt or they come to understand that this problem is very tough, क्या रिलीजन की वजह से इतनी लड़ाइयां हो रही हैं, इतना प्रॉब्लम हो रहा है, इसको हटा क्यों नहीं देते, स्पिरिचुअलिटी को खत्म ही क्यों नहीं कर देते, है कि नहीं? सो ये इमोशनल रिस्पॉन्स है एक्चुअली में। हाल इस अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ठीक इसका उल्टा करना चाहिए। वेरेवर यू आर स्टक अप, वेरेवर यू आर फाइंडिंग कि ये बहुत टफ प्रॉब्लम है, एक्चुअली यू नीड टू स्टडी मोर अबाउट इट rather than less, because we cannot become like a rabbit. There is a Sanskrit word which is called the Sanskrit word is shashak buddhi. Shashak is a Sanskrit word for a rabbit, and buddhi means intelligence. So intelligence of a rabbit. So what happens when a hunter comes and points his gun towards the rabbit? So although rabbit has capability to run very fast, but many times it has been observed that what rabbit does, it will stuck his head inside a burrow, or it will close his eyes whenever he sees a hunter, है ना? इतना ज्यादा डर जाता है वो कि कई बार वो डर से आंख बंद कर लेता, भागता नहीं है। So because he has closed his eyes and he cannot see the hunter, so for few moments he understands that the hunter doesn't exist, hunter is not there. This is a real phenomenon. So this is called shashak buddhi, intelligence of a rabbit. So we cannot do this type of thing with religion of spirituality, because since long people have been trying to eradicate it from its roots, but more and more people are actually becoming interested in it. We are seeing more and more people are getting interested in, more and more people are asking questions, they want to explore it. अब conclusions अलग अलग लोगों के अलग different हो सकते हैं, but nonetheless people are interested in it, है कि नहीं? So it is because it is very natural, actually, in fact it is very natural. So therefore this topic, science and spirituality, is very relevant topic. There are many misconceptions related to both these fields of knowledge, in science also and spirituality also. So therefore it's important to discuss some misconceptions and unification. This slide which I have prepared has actually 107 slides, and also previously I have done a lot of research. So this I may not be able to present all this. So few concepts I will tell you, and after that we can take question answers. Whatever question you will ask, I will show you slides or information related to that field. So and after that, after this session, I will share the slide also, so you can see it for yourself. So let us talk about empowerment. आप आज के टाइम में आप देखेंगे this is one of the most talked about topic, empowerment. तो empowerment होता क्या है? आप अगर देखेंगे जो पुराना दुकान का सिस्टम था, अभी भी हैं कई सारी दुकानें, बट वो पुराना सिस्टम क्या है कि आप किसी दुकान में जाते हैं, शॉपकीपर जो है बहुत सारे आइटम्स शॉप के अंदर है, सामने आप शॉप के अंदर नहीं जा सकते, आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए, है ना? एंड यू टेल द शॉपकीपर कि मुझे ये चाहिए, एंड शॉपकीपर विल गिव यू, आई थिंक देयर इज सम नॉइज coming. The shopkeeper will give you. Then, so here there is no freedom, है ना? There is no freedom. आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए. Then came the concept of supermarket. Supermarket में क्या है? आपको freedom दे दिया, आपको empower कर दिया. Freedom, empowerment means giving freedom to someone, and freedom is power actually. Therefore this word is used empowerment. तो आपको फ्रीडम दे दिया कि आप पूरे दुकान में घूमिए और जो भी सामान आपको चाहिए आप लीजिए, आपके हाथ में, आपके पास फ्रीडम है. Similarly when we come to consumption of media, पहले क्या होता था? फिक्स चैनल्स होते थे कि इस चैनल पे, जिस चैनल पे जो आ रहा है वही आपको देखना है. आप ज्यादा से ज्यादा चैनल बदल सकते हो, लेकिन आप नहीं डिसाइड करते थे कि किस टाइम पे क्या देखना है.
है कि नहीं? So later on, now you see there is concept of OTT platforms are there, Netflix, Prime, there are a lot of OTT platforms now. What is the difference? Difference ये है कि now you have lot of choices. So now we have been given freedom. Similarly YouTube also, है कि नहीं? पहले क्या था, अभी भी है, public transports, है कि नहीं? But to revolutionize those systems, new concept came, that is Uber or Ola, है कि नहीं? Now, if you see, there is one thing common. So we say that this is called development. So development means we can define. Development means giving empowerment to people. And what is empowerment? Empowerment means freedom. People should have freedom. Now there is a problem with this. Freedom is good, and everyone should have freedom. But with freedom comes responsibility. What kind of responsibility? Now that you are choosing what you have to see, what you can see, how much to see, है कि नहीं, कब क्या देखना है, now that because you are choosing it, so therefore you are now responsible for what you become or what you are consuming, है कि नहीं? And if you are not mentally strong, or if you are not, if you do not have lot of processing power to understand what is beneficial and what is not, so you may end up investing your time, investing your potential, and that is what is happening today. So empowerment is not sufficient. So if you are getting power, if someone is getting power, then in order to use that power, utilize that power for a proper purpose, if you want to utilize that power for a proper purpose, in proper direction, then you must also have education. Education about what? About how to control that power, how to channelize that power. है कि नहीं? So it's good that we have freedom, but what is not good is that कि freedom देने के लिए तो बहुत सारे advancement हो रहे हैं. आप देखोगे हर फील्ड में एडवांसमेंट हो रहा है. यहाँ पे कुछ मैंने आपको दिखाया. फ्रीडम देने के लिए बहुत सारी फील्ड में एडवांसमेंट हो रहा है, लेकिन उस फ्रीडम को कैसे कंट्रोल करें, हाउ टू चैनलाइज इट, ये सिखाने के लिए जो एजुकेशन सिस्टम है, दैट इज नॉट बीइंग अपग्रेडेड. सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट. सो देयर इज अ गैप बिटवीन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. So of course, the trend of technological advancement is like exponential graph, and it is going above. But if we plot in same graph, if we plot the advancement of our knowledge, our capability to handle these freedoms, our capability to handle the freedom which we have got through internet. And the problem, there is one more problem with this, is as we are getting free, more we are susceptible to manipulation. Because now ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको मैनिपुलेशन से बचना है, क्योंकि फ्रीडम आपके हाथ में दे दिया गया है कि नहीं, थ्रू ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स, थ्रू इंटरनेट, थ्रू सो मेनी थिंग्स, है कि नहीं. तो क्योंकि आप एम्पावर्ड हैं ऑलरेडी, और क्योंकि आपको फ्रीडम दे दिया गया है ऑलरेडी, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये इंश्योर करें कि आप उस फ्रीडम को प्रॉपर जगह पे लगाएं, है कि नहीं. आप देखिए कितना यूज करना है उसको, कितना टाइम बिताना है उसके ऊपर, आप जज कीजिए, क्या देखना है ये आप चूज कीजिए. एट द सेम टाइम you also have to see, you also have to keep in check कि you are not being manipulated by others. अब आज के टाइम पे अगर आप देखें, so this is responsibility. And this responsibility has come due to freedom, actually. So freedom is good, but freedom without education, and education, I don't mean education, technical education or of academic field only. I mean education about how to use our
how to use our time, how to use our mind, how to grow to our optimum potential. This education I'm talking about. So this is something which is lacking. So freedom is good, but जिस रेट से फ्रीडम दिया जा रहा है, जिस रेट से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है या एकेडमिक फील्ड्स, बाकी सारी एकेडमिक फील्ड्स एक्चुअली में एडवांस कर रही हैं, सेम रेट से अगर ये एजुकेशन भी एडवांस नहीं करेगा, education again not about academic education I'm talking about, that is of course advancing, but education about life in general, education about life is a different topic altogether, you know. So therefore that education is not growing, and that is why spirituality has become even more relevant in today's time, even more relevant than ever actually. So this is burden of freedom. Freedom can become burden. It may become burden if you don't have power, if you don't have a strategy, or you don't hold that power to control it or manipulate it properly. इसलिए आप देखोगे आज के टाइम पे जो सबसे बिगेस्ट कंपनीज हैं, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट टर्नओवर है जिन कंपनीज का, जो टॉप कंपनीज हैं, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो दे डू नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग एक्चुअली. They do not produce anything. They do not manufacture anything. For example, let us take example of Facebook. How Facebook earns money? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप इसका आंसर समझेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको अपने पोटेंशियल के बारे में एक्चुअली पता चलेगा. And that is where spirituality plays a very key role in these things. So science is about advancing the technology. But point is that who will make sure that it's not just technology, it's not just that technology is advancing, humans should also advance. है कि नहीं? What is that science? Where is the what is that subject which one should study to understand how humans should advance? For example, science can make means of communication better and better. Again, so we can say the means of communication has become advanced. So advancing the means of communication is one thing, but another thing is to advance the quality of communication, which is something which science has nothing to do with actually. And therefore questions, especially questions related to life, questions related to purpose, questions related to morality. So these things are the subject matters of spirituality. क्योंकि ये मैकेनिकल टॉपिक्स नहीं है, मैकेनिकली इनको नहीं समझा जा सकता इन सब चीजों को. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लाइक अ गन इज देयर. तो गन को आप अगर साइंटिफिकली स्टडी करें, वो एक चीज है कि गन कैसे चलता है, उसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है, बुलेट कैसे काम करता है ना, कैसे जो है उसका बैरल कितना लंबा होना चाहिए, और जितने भी डिटेल्स हैं उसमें थर्मोडायनेमिक्स आता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स आते हैं, एवरीथिंग, बैलिस्टिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग आता है, बैलिस्टिक्स. तो इतना सारा नॉलेज जो है, साइंटिफिक नॉलेज को लगा के एक गन बनाया जाता है. सो दैट इज व्हाट साइंस कैन डू. बट सेम गन व्हेन इट इज यूज्ड बाय अ क्रिमिनल, they use it to take someone's life. Same gun when it is used by a law enforcer and a policeman, or suppose a soldier, it is to save a life. So same gun है, तो गन के बारे में आप जान सकते हैं साइंस को यूज करके. लेकिन कोई व्यक्ति उसको मिसयूज भी कर सकता है. कोई उसको मिसयूज करेगा या प्रॉपरली यूज करेगा, उसका मोरालिटी, मोरल कंपस जो है, that you cannot define by science. Moral compass of a person cannot be defined by science. And so therefore so someone can say there is a field called psychology जिसमें पढ़ाया जाता है ये सब चीज. साइकोलॉजी एक फील्ड है जिसमें कि ये चीजें पढ़ी जाती हैं. सो साइकोलॉजी में ये चीजें पढ़ी जाती हैं और सेल्फ डेवलपमेंट और ये सब चीजें डिस्कशन होता है. बट आप अगर ध्यान से पढ़ोगे साइकोलॉजी फील्ड के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि इट इज नॉट, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट डू नॉट ट्रीट इट एज a subject of science.
most of the scientists. I am not saying that it is not science. I am saying it is actually science, and it is even more important science than other branches of knowledge like physics and chemistry. But what I am saying is that it is not strictly based on, like for example, when we talk about life, human life, है कि नहीं, तो लाइफ का सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना. लाइफ का सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है. बट अगर आप किसी व्यक्ति से पूछो कि टेल मी समथिंग अबाउट योर लाइफ, you will find that that person doesn't start defining his life by describing his you say biological features. Why? Because we don't identify ourselves simply by our biological features. There is much more going on inside, which constitutes life. Biological aspect is one thing. So biology is just a study of one aspect of life. There are many other things which are not being studied properly. And that is why even if we advance scientifically, even if we are advancing technologically, still you see people are not, you cannot say very confidently that people are much happy than before. People are more peaceful than before. Even if you see normal things like air, water, food, you know, these things are also getting polluted day by day. Why? Because the questions about life, or the life questions about life, is not being studied seriously. There is no institution, there is no formal education about what is life, how to live a good life, you know, about morality. By using science, you cannot even understand these terms actually. Terms like morality and terms like purpose of life. There are many scientists who say very directly, they accept that science cannot define purpose. Science can tell you what it is. So therefore, knowing what something is also important, as well as knowing its purpose. Similarly, life, when we talk about life, तो life का purpose क्या है कि नहीं? So these topics are very important for someone. And then morality, how to make sure that we have a proper understanding about life, and we are advancing not only in technological field but also as a person. So that is where spirituality comes into picture. And if you remove this spiritual education from the picture, then freedom will become burden. And that is what is happening today. So on internet, everything is available for free. That is power. But if you research or even search on Google, do a simple search, how much internet they are using for what, you will find that most of the internet people are using their internet to browse pornography, which is harmful. Even psychologists say that. So the point is that we are getting freedom and we are getting empowered, but in order to channelize that empowerment, that freedom properly, we also need another knowledge, and that is spirituality. Otherwise, this freedom will become burden. So freedom without spirituality, freedom or empowerment without spiritual education, looks something like this. This is a video. So he's handing over the gun to the monkey. This is empowerment. But monkey doesn't have knowledge. So empowerment without education, what will happen? So simply advancing in the field of technology, simply advancing in the field of strict academic fields, what will happen? So he's teaching also कि ऐसे चलाओ gun. This is skills education in skills.
एजुकेशन अबाउट स्किल्स। तो एम्पावर भी कर दिया, स्किल्स भी सिखा दिया, बट व्हाट अबाउट मोरालिटी, है कि नहीं? Empowerment without education, है ना? Empowerment without spirituality. It looks something like this, and that is what is happening today. आप देखो, इतने 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 पुलिस हैं, इतना पुलिस है कि नहीं? इतने केसेस हैं, इतने इतने कोर्ट्स हैं, इतने जजेस हैं, फिर भी आप देखो क्राइम रुक नहीं रहा। Why? Because you cannot simply stop crime by making laws. Just like अगर आपको करप्शन रोकना है, तो लोगों ने सोचा कि करप्शन को रोकेंगे अगर हम जो है लॉज को स्ट्रिक्ट कर दें तो करप्शन रुक जाएगा। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं, और ऑफ कोर्स लॉज का अपना एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसकी लिमिटेशन भी। अल्टीमेटली आप लॉज बना दोगे, लॉज क्या है? वो तो कागज का टुकड़ा है ना। लॉज किसी पेपर पे लिखा होता है लॉज, बस कागज का टुकड़ा तो करप्शन नहीं रोकेगा। देयर विल बी सम पर्सन, some few people will be there who will use that law, है कि नहीं, to enforce morality. But problem is that कि जिसको भी आप इंचार्ज बनाओगे कि आपको इंश्योर करना है कि करप्शन नहीं होना चाहिए, आपको इंश्योर करना है कि ये लॉ इंप्लीमेंट हो, वो व्यक्ति करप्शन करता है, तो क्या करोगे आप? What is the solution? To punish criminals or to punish those who don't follow the principles of morality, constitution, according to constitution, there is a system of judiciary. But what if some people who are in judiciary, they become corrupt? What will you do? And this is where concept of spirituality comes into picture. कि there is no alternative to spiritual education. तो अगर स्पिरिचुअलिटी को पिक्चर से हटा देते हैं अगर हम, और हम सोचे कि नहीं हमें स्क्रिप्चर्स का जरूरत नहीं है, हमें वैदिक स्क्रिप्चर्स का जरूरत नहीं है, हमें स्पिरिचुअलिटी की जरूरत नहीं है, we ourselves will do research and we will find out solutions and we will keep things in place, proper system बनाएंगे, proper strategy होगा, सब कुछ well planned होगा, और हम उसको implement करेंगे, ठीक है ना? और स्पिरिचुअलिटी का कोई रोल नहीं है इसमें। We will simply empower more police officers, we will, हम जो है जो selection system है उसको और strong करेंगे। पर आप कितना कुछ भी कर लीजिए, ultimately you are dependent on a person and his or her moral compass, and that moral compass, and we are saying, we are actually hoping that people are born honest. आप आईएएस यूपीएससी के एग्जाम में जाते हो, इंटरव्यू में बैठते हो, आपसे पूछा जाता है कि कल को आपको कोई आके ब्राइब देगा तो आप क्या करोगे, है कि नहीं? पूछा जाता है कि नहीं? तो लोग कई डिफरेंट आंसर्स देते हैं। मेरा ये मानना है कि लोगों को ये इंटरव्यू जो दे रहा है व्यक्ति, उसको सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि आप ये बताइए, आप ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैं कैसे अपना ऑनेस्टी मेंटेन करूंगा, कैसे मैं ग्रीड को कंट्रोल करूंगा। आप ये बताओ कि पूरे एजुकेशन सिस्टम में 25 साल मैंने पढ़ाई की है, स्कूल में, कॉलेज में, है कि नहीं, इतनी सारी डिग्री है मेरे पास, कौन से सब्जेक्ट में आपने हमें ये सिखाया कि ग्रीड को कैसे कंट्रोल करते हैं? पहले ये बताइए। तो आपने जो चीज सिखाया नहीं है, जो चीज आपने पढ़ाया नहीं है, उस पर आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो? या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है एक्चुअली। आपसे वो चीजें एक्सपेक्ट की जा रही हैं जो कि आपको कभी बताया ही नहीं गया, कभी पढ़ाया ही नहीं गया। We have not been taught about the laws of life, laws of a world, how world moves, and it is very different, very different from what we know in our schools and colleges actually. So who will take responsibility for this? कोई ऐसी दवाई भी नहीं है, केमिकल इंजीनियरिंग में करके, रिसर्च करके कोई ऐसी दवा, अब बताया जाता है कि ऑल ह्यूमन इमोशंस आर प्रोडक्ट ऑफ केमिकल्स।
ठीक है ना. There is no such thing as soul or spiritual entity. ये सब नहीं है. We are just product of chemicals. If we are product of chemicals, then we should provide chemical solutions. We should provide solutions which are based on chemical. For example, is there any medicine to cure the disease of greed? कोई है ऐसी कोई दवाई बताइए. ग्रीडोसिन. सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को दीजिए सुबह और शाम और कोई करप्शन नहीं होगा. तो जब हम केमिस्ट्री के बेसिस पे सॉल्यूशंस नहीं बना पा रहे हैं, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं प्रॉब्लम को, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इट्स ऑल जस्ट केमिकल्स? सो हाउ एथिज्म इज साइंटिफिक? जबकि इस क्लेम का कोई लस्ट, ग्रीड, एंगर, इसकी कोई दवाई नहीं है. there is no chemicals to cure this. हाँ, बढ़ाने के लिए है दवाई. एंगर बढ़ाने की दवाई है, लस्ट बढ़ाने की दवाई है, but to cure it, और उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं बहुत सारे. To cure these emotions. So simply saying we are product of chemicals. What type of chemicals are we? When you ask a person who are you, he doesn't start by saying कि I am 80% water, 5% iron, 3% calcium. People don't start by saying why? Because they don't identify themselves as a chemical. It's as simple as that. It is a common sense. You don't need a scientific research to prove that we are more than chemicals. You just ask someone, who are you? Define something. Tell me something about yourself. So no one goes like कि मेरे lungs का size जो है इतना है और मेरा फेफड़ा जो है वो इतने बड़े हैं, उसका जो wall का thickness है वो ये है. You don't define yourself, your life from biological perspective. So how can we say that we are studying life in biology? You cannot keep life in biology subject. Life is not just biological. आप समझ रहे हैं बात? And then when you go in real life, अभी तो आप कॉलेज में हो ज्यादातर, मुझे लगता है शायद एलपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही हैं केवल यहाँ पे. ज्यादातर आप लोग कॉलेज में हैं अभी. आप जब रियल लाइफ में एंटर करेंगे ना, रियल लाइफ शुरू होती है कॉलेज के बाद. आप जब रियल लाइफ में एंटर करेंगे तो सडनली आपसे इतनी सारी चीजें एक्सपेक्ट की जाएंगी जो कि आपने कभी पढ़ी नहीं होंगी. आपको अभी ये टेंशन होता है ना कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया आउट ऑफ सिलेबस था, ये तो पढ़ाया नहीं था, ये तो किताब में नहीं था. आप अभी वेट करो कॉलेज खत्म होने का, और जब जिस दिन से लाइफ शुरू होगा आपको ऐसे ढेरों सवाल आपके सामने खड़े होंगे एंड यू विल बी एक्सपेक्टेड टू सॉल्व इट. पीपल विल बी रेडी कि भाई बताओ, सॉल्यूशन बताओ, क्या हुआ, आप खड़े रह गए, ऐसे क्यों खड़े, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप, आपको आता नहीं है, लगता है आपने ठीक से बीटेक नहीं किया. एज इफ दे हैव टॉट दीज थिंग्स इन बीटेक. देयर इज अ वॉरेन बफेट को आप सब जानते होंगे. वॉरेन बफेट के एक बिजनेस पार्टनर हैं जो कि ऑलमोस्ट ही सेम लेवल, बट वॉरेन बफेट इज मोर फेमस. Charlie, his name is Charlie, and both are business partners. So I was reading about his life. So he said a very important thing. Yes, Charlie Munger. He said a very important thing. He said कि what we are lacking is that in our education system or learnings about life is that we are not being taught what other intelligent people have already figured out about life. We are not being taught what other intelligent people have already figured about life. आप समझिए बात को. This is the greatest loophole. This is the greatest loophole in our life that we are not aware of all this. आप देखो कि ऐसा नहीं है कि हम पहली बार ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. 21st सेंचुरी में लोगों ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि लाइफ का पर्पस क्या है, या क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, क्या हम सिंपली केमिकल्स हैं, या हमारा ओरिजिन बाय चांस हुआ है या गॉड ने क्रिएट किया. लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन पूछ के ये वी आर वेरी इंटेलिजेंट in 21st century, we are very intelligent and therefore we are asking these questions. No one before has asked these questions actually. And why we have this illusion? Do you know? We have this illusion because we are not studying about those people who have asked and also answered these questions before in history. We are reinventing the wheel.
रीइन्वेंटिंग द व्हील का मतलब समझते हैं? हर व्यक्ति खुद अपने आप से ही लाइफ के बारे में समझ रहा है, और कैसे समझ रहा है? हिट एंड ट्रायल कर. पीपल आर डूइंग हिट एंड ट्रायल with relationships, with life, with emotions, everything. आप देखो, अगर कोई मशीन आती, अब जहां तक साइंटिफिक स्टडी का सवाल है, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अगेंस्ट साइंस, neither science is against spirituality. The problem is atheism. Now what has happened, atheism, people think that atheism and science are synonymous, which is not true. Atheism is a belief system, actually. Science is not. एथिज्म ये कहना कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, डेफिनेटली एग्जिस्ट नहीं करते गॉड. क्यों? क्योंकि मैंने देखा नहीं. आपने तो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं देखा, हमने बहुत कुछ नहीं देखा. इतना इतना बड़ा समुद्र है पूरी पृथ्वी के ऊपर, उस समुद्र के अंदर इतने सारे जानवर हैं. आज भी नए नए जानवरों की स्पीसीज डिस्कवर हो रही, वो भी हमने नहीं देखा. तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं करते? सोलर सिस्टम के बाहर भी ठीक से अभी तक हम गए नहीं. सोलर सिस्टम के बाहर भी ठीक से अभी तक गए नहीं हम. And we are giving definite, and people are giving definite statements that God doesn't exist, as if they have traveled all the universes and they have seen it all. है कि नहीं? मान लीजिए कि मैं आपको बोलता हूं, आप जाइए अपनी यूनिवर्सिटी में और ढूंढिए थोड़ा, जैसे शैलेश मिश्रा है और राकेश है, राकेश कुमार शर्मा. मैं राकेश को कहता हूं कि जाइए आप यूनिवर्सिटी में जाइए और देखिए शैलेश है कि नहीं, शैलेश आज आए हैं कि नहीं. तो मान लीजिए राकेश जाते हैं और ग्राउंड फ्लोर पे देखते हैं. मान लीजिए आपका यूनिवर्सिटी 2 या 3 फ्लोर है, सपोज कीजिए. तो जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, अच्छे से देखते हैं और आते हैं मेरे पास और मुझे एक थ्योरी देते हैं कि शैलेश डजंट एग्जिस्ट इन द एलपीयू बिल्डिंग. क्या फ्लॉ है इसमें? क्या फ्लॉ है? फ्लॉ ये है कि he should have said कि शैलेश doesn't exist in ground floor, और ग्राउंड फ्लोर पे भी वो जगहों में देख जहां पे मैं एक्सेस कर पाया. है कि नहीं? मतलब यूनिवर्स, सोलर सिस्टम के बाहर जाना तो छोड़ दीजिए, अपनी बॉडी के अंदर भी देखो. आज भी आप डेंटिस्ट्री में, दांत की फील्ड में आज भी आप पीएचडी कर सकते हो. इसका मतलब समझते हैं आप क्या होता है? इसका मतलब ये है कि दांत में आज भी कुछ ऐसी चीजें हैं नई, जो दांत के बारे में जो नहीं पता है. दांत के बारे में, और दांत तो बहुत बड़ा चीज मैंने बता दिया. लेट अस टेक एटम, लेट अस टेक इलेक्ट्रॉन, और छोटा कर देते हैं. अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज इलेक्ट्रॉन कंपोज्ड ऑफ, तो लोग हड़बड़ा जाते हैं. बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं. अभी तो रिसेंट रिसर्च चल रहा था, लोगों ने एटम को एटम बुलाना इसलिए शुरू किया था. एटम एक्चुअली बाय डेफिनेशन इट मींस फंडामेंटल यूनिट व्हिच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन. एटम को एटम इसलिए बुलाना शुरू किया था क्योंकि उनको लगा था कि इसके बाद नहीं टूट सकता है. हमने पता कर लिया है फाउंडेशनल मैटर क्या है, और इसको जोड़ते जाओ मॉलिक्यूल बन जाता है, इसको जोड़ते जाओ कॉम्प्लेक्स चीजें बन जाती हैं. और जो है इसी तरीके से धीरे धीरे कई सारे अमीनो एसिड इकट्ठा होके प्रोटीन बन जाते हैं, कई सारे प्रोटीन इकट्ठा होके डीएनए बन जाता है, और फिर लाइफ बन जाता है. ऐसे ही क्या दिक्कत है? सब समझा दिया हमने, देखो आप. तो ऐसा लग रहा था लोगों को, पर जब उसके अंदर घुसे तो देखा यार ये तो एटम, हम सोच रहे थे कि ये टूटता नहीं, ये तो टूटता है. इसके अंदर भी कुछ है. उसको जब तोड़ा तो देखा उसके अंदर नया यूनिवर्स है, अपने आप में यूनिवर्स है. कितना मिस्टीरियस क्रिएशन है ये, कि यूनिवर्स इन्फिनिटी केवल बाहर नहीं है, इन्फिनिटी अंदर भी है. एटम के अंदर भी इन्फिनिटी है. यू कैन नॉट इवन इमेजिन हाउ दिस, ये जो क्रिएशन है कितना मिस्टिक है. एटम के अंदर भी इन्फिनिटी है, क्योंकि आप अगर एटम को तोड़ोगे तो 2 ऑप्शन है, या तो कुछ निकलेगा या तो कुछ नहीं निकलेगा. कुछ नहीं निकलेगा ऐसा हो नहीं सकता. कुछ नहीं निकलेगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना, वो किसी चीज से मिलके बना है. और दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमेशा कुछ ना कुछ निकलता रहेगा, और फिर वो जो निकलेगा उसके बाद फिर से 2 क्वेश्चन आएंगे कि या तो कुछ नहीं निकलेगा या फिर कुछ निकलेगा. ऐसे ऐसे आप तोड़ते जाओगे तो इट इज ओनली लिमिटेड बाय कि आप कितना तोड़ सकते हो. आप पहले तोड़ नहीं पा रहे थे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ नहीं पा रहे थे. अभी रिसेंट
हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया तो जो है हेड्रॉन कोलाइडर बनाया, हेड्रॉन कोलाइडर। बहुत सारी कंट्रीज के लोगों ने पैसा दिया उसमें, रिसर्च में, आपको शायद पता हो। तो वो क्यों? तोड़ने के लिए, पार्टिकल्स को तोड़ें और देखें कि अंदर क्या है कि नहीं। हिग्स बोसोन पार्टिकल, तो अभी बात हिग्स बोसोन पार्टिकल तक आ गई। अब वो फिर से पार्टिकल, अब फिर दो ऑप्शन है। अब हेड्रोन कोलाइडर बनाने में इतना टाइम लगा, इतना पैसा लगा, है कि नहीं। अब समझिए कि 30-40 साल, 60 साल और लगेंगे अब उसको तोड़ने में, है कि नहीं। तब तक हम सब बूढ़े हो चुके होंगे, और बुरा मत मानिएगा बट कई लोग हम जा चुके होंगे। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आप मशीन के साथ रिसर्च कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, देखने के लिए कि इसका पर्पस क्या है। ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई मशीन आता है हमारे घर, मान लीजिए वॉशिंग मशीन आता है, सपोज एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, और मान लीजिए कि हमें नहीं पता वो कैसे वर्क करता है। तो आप इंपीरिकल मेथड से अगर जाएं तो आप उसको तोड़ोगे, क्योंकि जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। दिस इज व्हाट मटेरियलिस्टिक साइंस इज अबाउट, कि आपको तोड़ना पड़ेगा। एटम को भी क्यों तोड़ रहे हैं? ताकि जब तक आप तोड़ोगे नहीं आपको पता ही चलेगा अंदर है क्या। तो आप उसको तोड़ोगे, मशीन को, देखोगे कि इंडिविजुअल पार्ट्स क्या हैं। सर्किट को कैसे समझते हैं हम? ऐसे ही समझते हैं। आप सर्किट को तोड़ोगे तो आपको पता चलेगा इसमें ट्रांजिस्टर है, रेजिस्टर है। फिर आप रेजिस्टर को तोड़ो, देखो अंदर क्या है। कैपेसिटर को तोड़ो, उसमें देखो अंदर क्या है, प्लेट्स हैं। इसलिए क्रॉस सेक्शन पढ़ाया जाता है। और फिर हम जानते हैं कि अच्छा, कैपेसिटर के अंदर ये कंपोनेंट्स हैं, उसको जब जोड़ते हैं तो कैपेसिटर ऐसे वर्क करता है। इसी तरीके से अगर आप रेजिस्टर को तोड़ोगे या लेट्स से ट्रांजिस्टर को तोड़ते हो, एनपीएन पीएनपी, आपको पता चलेगा अच्छा एनपीएन ऐसे काम करता है, पीएनपी ऐसे काम करता है। फिर धीरे 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 आप यूनिट बनाते हो कि चलो आप देखते हैं कि कैपेसिटर और रेजिस्टर मिला दें तो क्या होता है, तो आरसी सर्किट बनता है कि नहीं। फिर इसमें अगर पीएन ट्रांजिस्टर डाल दें फिर क्या होगा, फिर धीरे 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 कॉम्प्लेक्स सर्किटरी इमर्ज होता है। और अगर आपके हाथ में कॉम्प्लेक्स सर्किटरी ही दे दिया जाए और आपको बोले कि ये कैसे वर्क करता है बताओ, तो आपको उसको तोड़ना पड़ेगा। दिस इज what is empirical method, scientific empirical method of understanding things. और मान लीजिए, तो मशीन के साथ ये कर सकते हो, आप तोड़ सकते हो क्योंकि आप दूसरा मशीन खरीद सकते हो। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ, कैन यू डू हिट एंड ट्रायल विथ योर लाइफ, स्पेशली व्हेन वी हैव ओनली वन? एंड सेकेंड थिंग इज दैट आइदर वेट फॉर रिसर्च, रिसर्च होने दीजिए, सोलर सिस्टम से बाहर जाएंगे जब, दूसरे यूनिवर्स तक पहुंच जाएंगे जब, है कि नहीं। वो भी पता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो हो सकता है उस यूनिवर्स में पहुंचे तो वहां से दिखे कि अरे और यूनिवर्स दिख रहे हैं सामने, है कि नहीं। तो दिस इज कॉल्ड डिपेंडिंग फॉर नॉलेज, वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर ओन सेंसेस। दिस इज materialistic science. Actually, this is how materialistic science works. And that is why science doesn't support atheism. Because atheism, it is a philosophy, it is a belief. So anyone who is following science strictly, he or she can never say that I am certain that God doesn't exist. The moment he or she says, immediately understand he is fool. They are cheating you. It's as simple as that. Because science takes knowledge from the senses, our senses, and our senses has limitation. You can say that we have not seen God on this earth, and that also you can say about yourself. Now problem comes when we talk about, and that is why you will find there are a lot of scientists who also believe in God. There are many scientists who don't believe in God, but there are also scientists who believe in God. So point is that science doesn't define science. It is not scientific to say God doesn't exist. This is the first thing. God exists or not, that's a separate question. But first thing we have to understand is that atheism is not science, scientific understanding. Actually एथिस्ट जो है वो साइंस, आपने सुना होगा कहावत की कंधे पे रख के बंदूक चलाना। आप लोगों ने सुना है
कि मेरे कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है। तो एथिस्ट जो हैं वो साइंस के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं। कंधे पे रख के बंदूक चलाने का मतलब है कि अगर किसी ने सपोज पर्सन ए ने पर्सन बी के कंधे पे रख के बंदूक चलाया और आप पीछे मुड़ के अगर देखते हो तो पर्सन बी दिखेगा, आपको लगेगा पर्सन बी ने चलाया है, बट एक्चुअली में पर्सन ए ने चलाया जो कि छुपा हुआ है पर्सन बी के पीछे। दिस इज व्हाट एथिस्ट आर डूइंग, हैव बीन डूइंग। मेरा ये कहना है कि अगर आप मानते हो कि गॉड डजंट एग्जिस्ट, आप डायरेक्टली बोलो ना कि गॉड डजंट एग्जिस्ट, दिस इज माय बिलीफ, this is what I believe in, it's okay, it's fine. But why do you say it is scientific? Science says that God doesn't exist. It is not scientific to believe in God. This is wrong statement, taking support of science to say something unscientific. आप समझ रहे हैं बात को? So if we remove science, and science का limitation मैंने आपको बताया, साइंस का लिमिटेशन ये है कि इट कैन हेल्प अस एडवांस इन टेक्नोलॉजी, इट कैन हेल्प अस एडवांस इन knowledge about many things actually, in fact, and that is useful, but it cannot define morality, it cannot define purpose of life, it cannot solve questions of life. And that is why even scientists also, they look for towards spirituality to find answers to all these things. If somebody is practicing spiritual practice, somebody is doing spiritual practices, you know, suppose let us take meditation. Meditation has gone, do you know there is $1 billion industry centered around meditation, $1 billion industry centered simply around giving solutions based on meditation. Where has this concept come from? There is an app, there are so many apps. There is one app that is Headspace, it's called Headspace. There is an app called Calm. These two are leading businesses in this field of meditation, providing meditation-based solutions to people. And they're $1 billion industry. How can, when we say that Vedic scriptures are mythology, how can mythical things solve real problems of life? This is my question. हम कह रहे हैं कि ये मिथ है, वैदिक स्क्रिप्चर्स मिथ है, और उस मिथ को बेच के $1 बिलियन इंडस्ट्री बना हुआ है। लोगों को फायदा भी हो रहा है, और फायदा नहीं हो रहा तो पैसे क्यों दे रहे? लोगों को फायदा भी हो रहा है, आप समझ रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, लोग पैसे भी कमा रहे हैं, पर इंडियंस को बता दिया गया है कि ये मिथ है, आप मत पढ़िए, ठीक है, हम पढ़ के पैसा कमाएंगे, आप मत पढ़िए, आप वो पढ़िए जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। And that is why we don't see these subjects being taught in schools or colleges. आप समझ रहे हैं बात को? So how can something which is myth is solving real problems of life? By preaching about myth, by practicing myth, somebody is getting really getting cured. And meditation is no longer just a fad. It has become a subject of scientific research. अब उसको लेके उसको mindfulness उन्होंने बना दिया, क्योंकि meditation बोलेंगे तो लगेगा वैदिक scriptures है. But nonetheless, that is separate issue. But point is that if we say that something is myth, then how it is working in life. So therefore, definitely those who say very definitely that God doesn't exist or spirituality is myth, it is based on blind faith, it means that their perspective is biased. And people should read more, study more. Even when we talk about science also, you will find that most of the things which we think is scientific knowledge, we don't read from scientists. We are not studying science from scientists. We are studying science from journalists, actually. You don't read books written by Nobel laureates. We read articles written by journalists based on the book written by Nobel laureates. And those articles doesn't only have truth, it also has opinion. And one of the example I can give you is that if you find, we all study about Newton's laws of mechanics, okay? Interesting thing is that कि आप NCERT, आप अपनी बुक में अगर पढ़ोगे Newton's law of mechanics, you will never find any mention of God in that book, any mention of God. But if you study the book
actually written by Newton, that is called Principia of Mathematica. It is kept nowadays also. It exists. That book exists. If you read that book, everywhere in every chapter and in conclusion of this book, that book also, Newton has written that this intricate system of laws cannot be sustained without counsel and dominion of an intelligent being. And that intelligent being must be beyond these laws. आप समझिए बात को? So this aspect is not taught. Why? Because many people will say कि ये scientific statement नहीं है, ये न्यूटन का personal belief था. ये न्यूटन का personal belief था. ये scientific experiment करके वो इस conclusion पे नहीं पहुंचा. ठीक है ना? तो मेरा कहना ये है कि जब आप ये पढ़ा सकते हो कि गॉड डजंट एग्जिस्ट, ये भी तो बिलीफ है ना. ये कहना कि लाइफ हैव ऑरिजिनेटेड सिंपली फ्रॉम केमिकल, ये भी तो बिलीफ है, इसका कोई प्रूफ है नहीं. आज भी कई सारे साइंटिस्ट हैं, देयर आर मेनी साइंटिस्ट हु डिनाई, हु आर सेइंग दैट कि अभी और भी वी शुड डू मोर रिसर्च ऑन दिस फील्ड. आई विल शो यू स्लाइड. We should do more research, and we don't agree if someone says that life has simply originated from chemicals. तो जिस चीज में अभी तक रिसर्च नहीं हुआ है वो जब हम डेफिनेटली पढ़ा सकते हैं ये कह के कि हाँ दिस इज साइंस. तो मेरा ये कहना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरा ये कहना है कि तो और भी बिलीफ्स पढ़ाइए, दूसरे साइड के बिलीफ्स भी आप पढ़ाइए, है कि नहीं, सो दैट पीपल कैन टेक. Let student choose which one they want to explore. जैसे ये देखो. I'm skeptical of the claim. I'm skeptical. A growing number of scientists are skeptical of Darwinian theory. We don't know this. Students don't know this. Why? Because they are not being taught. और ये भी scientists हैं जो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कोई religious लोग नहीं है, ये scientists हैं. We are skeptical of claims for the ability of random mutations And natural selection. to account for the complexity of life. So when we say, so even Darwin also, आप डार्विन का भी किताब पढ़ोगे तो डार्विन ने जो बुक लिखा है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसके अंदर उसने लिखा है कि ये जो आईज है, आईज के बारे में वो लिख रहा है कि ये आईज का कंस्ट्रक्शन इतना इंट्रिकेट है, इतना ज्यादा इंट्रिकेट है कि I also sometimes find कि the idea that it has evolved simply by chemicals, it seems ridiculous to me. Even Darwin has written in his book. तो आप समझ रहे बात. बट वो एस्पेक्ट, जैसे न्यूटन का एक एस्पेक्ट हटा दिया, वैसे डार्विन ने भी जो सारी चीजें लिखी वो नहीं बताया. एंड सेकेंड क्वेश्चन पॉइंट इज दैट कि डार्विन has talked about evolution, how various species has emerged. He is not talking about how life has originated, how chemical or dead matter, एक dead matter में life कहाँ से आता है. This question is still a mystery actually, which is not being solved. But you will find many people who will definitely say कि नहीं, मुझे clearly पता है कि chemical से भी life आया है और डार्विन ने बताया, डार्विन थ्योरी पढ़ाया जाता है. कहाँ से उसको ये आइडिया लगा? Obviously, he has studied these things. He has been taught, he or she has taught, he has been taught all these things. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप एक साइड का ओपिनियन पढ़ा सकते हो तो दूसरे साइड का ओपिनियन की पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है? Isn't it a bias? या तो आप फैक्ट्स ही पढ़ाओ केवल. पर आप अगर ओपिनियन, हालांकि आई डोंट बिलीव कि केवल फैक्ट्स पढ़ाने चाहिए, ओपिनियंस भी पढ़ाने चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंट लोगों के ओपिनियंस जो है वो फैक्ट के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, वो मैटर करता है. तो दोनों साइड के ओपिनियन पढ़ाइए एंड लेट स्टूडेंट्स डिसाइड कि which side they want to research more on. But if you are curtailing one side completely, आप इन ये भी साइंटिस्ट हैं. Careful examination Of the evidence. For Darwinian becomes theory biased. should be encouraged.
from so many universities, scientists I'm from so many skeptical. countries. Skeptical. Skeptical of claims for the ability of random mutations and natural selection To account for the complexity the complexity the complexity to account for the complexity of life. careful examination Examination. Of the evidence. for Darwinian theory. should be encouraged. There is a book which is written by I was reading last year. The book is called Island of Knowledge. It is written by a physicist, Marcelo Gleiser. In that book he writes कि he has compared कि जितना हमें पता है, जितना भी knowledge है हमें यूनिवर्स के बारे में, लाइफ के बारे में, let us compare it with an island. ठीक है ना? तो आइलैंड के आसपास जो समुद्र है, it is like the knowledge which we don't know yet, but at least we can see. जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपको जुपिटर के बारे में बहुत डिटेल में ना पता हो, मून के बारे में हो सकता है आपको पर्सनली बहुत ज्यादा ना पता हो, बट एटलीस्ट आप मून को देख सकते हो. तो आपको ये पता है कि मुझे इसके बारे में अभी और जानना है, मुझे अभी नहीं पता है इसके बारे में. सो यू आर अवेयर अबाउट, एक तो आप अपने नॉलेज के बारे में, at the same time you are also aware about what you don't know. Now he says कि but beyond the ocean there is horizon. Horizon is that point जिसके आगे आप देख नहीं सकते. और मतलब सिंपली अगर पुट किया जाए तो horizon is that point जिसके आगे आप देख नहीं सकते. तो आइलैंड पे खड़े हैं आप, और आप अगर देखते हैं तो आपको आइलैंड दिखता है. दैट इज लाइक कि नॉलेज जो हमें है अभी तक लाइफ और यूनिवर्स के बारे में. आइलैंड के आसपास समुद्र दिखता है. वो चीजें जो आप देख रहे हैं पर उसके बारे में पता नहीं है. और फिर होराइजन है. होराइजन के बियॉन्ड जो चीजें हैं वो तो दिख भी नहीं रहा है. मतलब ये भी नहीं पता है कि हमें कितना नहीं पता. Then he writes a very wonderful statement. Let me show it. In fact, let me show it to you. Then he writes a very wonderful statement in that book. We are driven to make sense of the world and our place in it. And advances in mathematics and technology, from geometry and lenses to calculus and computers, have expanded our reach, revealing details of the very small and the very large. But as the island of knowledge grows, Marcelo says, so do the shores of our ignorance. अब इसका मतलब क्या है? So I made a small drawing for you all to understand what he is saying. Let me show it. So he is saying कि ये अगर सर्कल है, अगर आप कंसिडर करें, this is how much we know about life and universe, that is island of knowledge. जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ रहा है वैसे वैसे ये जो शोर्स है, जितना आपको नहीं पता है उसका भी डायमीटर बढ़ रहा है. एक्चुअली उसका भी सर्कमफ्रेंस बढ़ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, पहले हमें लगता था कि केवल एक क्वेश्चन नहीं पता हमें, क्या कि एटम क्या होता है. पहले हमें लगता था केवल हमें ये नहीं पता है कि एटम क्या होता है. पर जब एटम के बारे में पता चला, व्हेन द आइलैंड ऑफ नॉलेज ग्रीव, तो हमें ये पता चला कि अच्छा हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में भी नहीं पता, अच्छा न्यूट्रॉन के बारे में भी नहीं पता, अच्छा प्रोटॉन के बारे में भी नहीं पता. तो एक क्वेश्चन का आंसर निकालने में 3 नए क्वेश्चन निकल के आ गए. So this is what he is saying कि as the island of knowledge is growing, so do the shores of our ignorance. जैसे जैसे नॉलेज जितना बढ़ रहा है उतना ज्यादा पता चल रहा है कि अरे हमें तो ये भी नहीं पता था. तो अगर इस रेट से हमारा नॉलेज बढ़ता जाए तो कितना टाइम लगेगा हर चीज पता करने में, खुद से रिसर्च करके. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग बुक, द आइलैंड ऑफ नॉलेज, है ना. यू कैन रीड. you should read science from scientists, not from journalists, है ना. So very interesting concept. So therefore he says कि और हमारा लाइफ इतना है नहीं कि हम वेट करें कि भाई प्रूव होगा, है कि नहीं. So is there any other method to understand about knowledge? So generally people say
Generally, people say that Vedic scriptures, these things are mythology. Previously, people didn't knew about science. तो उन्होंने क्या सोचा कि ये सब फेनोमेना कैसे एक्सप्लेन करें, तो उन्होंने सोचा चलो एक इमेजिनरी कंसेप्ट निकालते हैं, बोल देते हैं गॉड ने बनाया है कि नहीं. हमने बोल दिया, मतलब एक्चुअली में वो लोग अनपढ़ लोग थे, पिछड़े थे, और उन्होंने इमेजिन कर लिया क्योंकि उनके पास आंसर नहीं था, उनके पास कोई मीन्स नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था रिसर्च करने का. तो उन्होंने सोचा कि क्या करें, चलो ऐसा करते हैं कि एक इमेजिनरी कंसेप्ट बता देते हैं कि एक गॉड है, सोल है कि नहीं, और इससे जो है वहीं से सब कुछ आया. सो लेट मी शो यू. एंड देयरफॉर वहां से कंसेप्ट निकला कि ये सब माइथोलॉजी है. बट लेट मी शो यू, जिन लोगों के बारे में हम ये कह रहे हैं कि उनको साइंस नहीं पता था, उन्होंने जस्ट ऐसे ही हवा में बता दिया कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, just to avoid doing scientific research because they were not that much intelligent. हम जिनको less intelligent मान रहे हैं, let me show something about them to you. और बाहर के स्टेटमेंट्स में आपको बताऊंगा, ये किसी रिलीजियस लोगों ने नहीं लिखा है, किसी स्पिरिचुअलिस्ट ने नहीं लिखा है. मैं आपको साइंटिस्ट के स्टेटमेंट्स बताऊंगा, और बाहर जो स्कॉलर्स हैं जो कि दे आर नॉट स्पिरिचुअलिस्ट और रिलीजियस, देयर स्टेटमेंट्स आई विल कोट यू. Fritjof Capra, he has written a book, The Tao of Physics. He is American-Austrian physicist, and he writes, Fritjof was convinced, मतलब उसके बारे में लिखा गया है, Fritjof was convinced that in the Vedic texts of ancient India lay the key to understanding the science of quantum physics and beyond. Schrödinger, you all must be knowing about him. Schrödinger के वर्क के बारे में तो आप सब जानते हैं, बट आप लोगों को क्या नहीं पढ़ाया गया होगा वो ये कि he has also written a book called What is Life. He has also written a book called What is Life, जो कि आपके सिलेबस में कभी नहीं पढ़ाया गया होगा. उस बुक के अंदर अगर आप वो बुक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि Schrödinger used to study Vedanta Sutra. He used to study Upanishads. And he is quoting Upanishads and Vedanta Sutra in his book, or What is Life. He is not explaining life in terms of science. He is explaining life in terms of what sages have written in Upanishads and Vedanta Sutra. And somehow or other, few people, they say that sages and these people, they were not that much intelligent, and therefore they conceived this idea, concocted this idea of God and soul and all these things. Srimad Bhagavatam, which is a Vedic literature, describes in astonishing detail the procedure of childbirth, from a preconception to a pea-like formation and all the way to a fully grown child. It also describes some of the physiological changes in the fetus and the womb, and also the psychological changes in the mother and child within. An incredible read. It was authored ages before the scientists even considered trying to figure out all this out. This is Srimad Bhagavatam. It has 12 cantos or volumes, you can say, and this is 31st chapter. You can read it. मतलब ऐसा नहीं कि मैं just बता रहा हूँ हवा में, आप पढ़ सकते हो उसको. Niels Bohr, he said, ये इसका statement है, Niels Bohr का statement है, I go to the Upanishads to ask questions. Schrödinger, the multiplicity is only apparent. This is the doctrine of Upanishads, and not of the Upanishads only. The mystical experience of the union with God regularly leads to this view, unless strong prejudices stand in the way. Unless until आप biased or prejudiced हैं, अगर कोई व्यक्ति biased or prejudiced है तो वो बोलेगा कि ये God का concept unscientific है. But what Schrödinger is saying कि अगर आप prejudices को हटा दो तो आपको पता चलेगा कि there is mysticism also in this creation. Werner Heisenberg, who gave principle of uncertainty, he says quantum theory will not look ridiculous to people who have read Vedanta. मतलब अगर आपने वेदांत पढ़ा है तो आपको क्वांटम थ्योरी समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी. This is not my statement, by the way. This is not a statement of some Babaji. This is a statement of Werner Heisenberg. पर आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, है ना? And that is why you should attend our seminars. क्योंकि आप जो चीजें पढ़ रहे हैं वो one-sided picture है actually में. Do not make decisions about your life simply by taking education of one side. It is very risky business. Very, very risky business.
Quantum theory will not look ridiculous to people who have read Vedanta. Professor Brian David Josephson, ये अभी भी हैं, ही इज कंटेम्परेरी साइंटिस्ट, और आपको जान के हैरानी होगी कि 22 साल की उम्र में ही गॉट नोबेल प्राइज. 22 साल की उम्र में ही गॉट नोबेल प्राइज इन फील्ड ऑफ quantum mechanics. And there is a phenomena in quantum mechanics which is named after him, Josephson effect. 22 साल की उम्र में नोबेल प्राइज लेने के बाद इन्होंने स्पिरिचुअलिटी पढ़ना शुरू किया. एंड उनका स्टेटमेंट है ये, द वेदांत एंड द सांख्या होल्ड द की टू द लॉज ऑफ माइंड एंड थॉट प्रोसेस विच आर कोरिलेटेड टू क्वांटम फील्ड. I also wanted to show you a video by Brian Josephson. He was asked, let me show you the video. Like the paranormal to be real, it would invest the world with more magic and more interest. But I don't want to fool myself. So generally people say that this world is created, is a creation made up of matter only. There is no such thing as spirit, soul. There is no any spiritual thing. It's all just matter, and matter is governed by physical laws, and we can describe how it behaves through physical laws, through equations. But this person, Brian Josephson, ये तो interviewer हैं जो साथ में बैठे हुए हैं, Brian Josephson, after getting his Nobel Prize when he was 22 years old, he started to study the questions about life and universe more deeply. And he has done researches, and he has proved that there are things existing beyond matter also. There is a proof. He has proved. तो ये इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. आप इनका चैनल भी देख सकते हो. I would recommend it. Very interesting channel. The channel's name is Closer to Truth. तो ये जो व्यक्ति है जो आपको अभी दिख रहे हैं, ये चैनल चलाते हैं. And he goes to many atheists also and many scientists and asks difficult questions to them. So here he is asking Brian Josephson, कि you are one of the few scientists who believe in something beyond matter. So here very carefully what Brian Josephson has to say about science, atheistic science, and about this question. So I have to look at the vast majority of scientists who either think that the paranormal, parapsychology, ESP are not worth even thinking about, or who say it's just an outright fraud or hoax or waste of time. You're one of the few. So he's saying कि ज़्यादातर majority scientists do not believing in anything beyond matter, and you are one of the few. बहुत कम लोग हैं और आप उनमें से कुछ एक हैं जो कि ऐसा believe करते हैं. आप सुनिएगा what Brian Josephson answers. Leading scientists who would take the paranormal seriously. Why do you do that? Well, I would say, first of all, I would question your statements about the vast majority who dismiss it and few who believe it, because it's a fact that once you profess a belief that it may be true, this may damage your career prospects. वो कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए है, ऐसा नहीं है कि कम लोग बिलीव करते हैं गॉड में और बियॉन्ड मैटर. वो प्रोफेस नहीं कर पाते अपना बिलीफ. क्यों? क्योंकि आपका करियर प्रोस्पेक्ट डैमेज हो सकता है. Why? ऐसा क्यों है कि आप ट्रुथ बोल ही नहीं पा रहे हो. अब ये व्यक्ति क्या है, 22 साल में नोबेल प्राइज जीत गए हैं, सो ही इज ओपनली स्पीकिंग ट्रुथ. आप समझ रहे हैं? We should hear from these people because you cannot control them. They are not controlled by anyone. उसको जो अचीव करना था वो अचीव कर चुका है लाइफ में. Now he speaks truth. Surveys have suggested, in fact, quite a number of scientists believe that it's real but don't come out and say it. They're in the closet, as we say. Yes. Okay, fair comment. But so why is that the case? Now he asks कि ऐसा क्यों है कि scientists are not speaking truth. ऐसा क्यों है? ध्यान से सुनिएगा. Well, it's part of a sociology, something science is a bit like a club which has its rules as to what you may. कह रहा है कि science has become like a club which has its rules कि आप क्या डिस्कस कर सकते हैं क्या. And this is not problem of science. Let me tell you very frankly, this is problem of atheism actually. So what happens when atheists
dominates science. This is what happens. Even those things which has proof, Nobel laureates are saying, then also there is no research on it. May believe and what you may not. Especially before tenure. Yes, indeed. Because the biggest issue is intelligent design. It's really dangerous to express any interest in that, and the paranormal is not quite as serious an offense. Okay, so let's look at the paranormal, and so you can watch his video. So very interesting findings. Let me show you some some quotes by few scientists. This is a book which I'm in process of writing. It is just in a draft format, but I have done a lot of research. I will show few. So these are few articles, books, videos which I have watched, and I have made this list. It has around 86 links, and I have noted down few important points in it. आपने सुना होगा ये कहते हुए कि साइंस actually spirituality contradicts science. Spirituality contradicts science. I will show you a proof which will prove to you that actually spiritualists are contributing more in science, more than atheists. Just read this. Let me enlarge it. Baruch Abbas Shalev, he has written a book. The book's name is 100 Years of Nobel Prizes. तो 1901 से लेके 2000 तक 100 सालों में जितने लोगों को नोबेल प्राइज मिला है आज तक, उन सब को स्टडी किया इन्होंने और इन्होंने एक बुक लिखा है. अब उसके फाइंडिंग्स क्या है? 654 नोबेल लॉरेट्स थे, 654 नोबेल लॉरेट्स, or nearly 90% of them belong to one of the 28 religions. Remaining then 10.5% were atheists, agnostic or free thinkers. Atheists भी नहीं थे 10%. Therefore, one can be a religious and be a very good scientist also. Actually, spiritualists are contributing more in science. So 1901 से 2000 तक 100 सालों में जितने लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, उसमें से 90% नोबेल लॉरेट्स are spiritualists, not atheists. और जो 10% जो एथिस्ट हैं वो भी एथिस्ट हैं, एग्नोस्टिक्स हैं, कुछ फ्री थिंकर्स हैं. मतलब फ्री थिंकर मींस वो कहते हैं कि हम सोचते ही नहीं इसके ऊपर. एग्नोस्टिक मींस कि हमें पता नहीं है, वी आर येट सर्चिंग. एथिस्ट आर दोज फ्यू परसेंटेज हु से कि डेफिनेटली बोलते हैं ऐसा. बट मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट, 654 नोबेल लॉरेट्स, दे आर स्पिरिचुअलिस्ट. नॉट ओनली स्पिरिचुअलिस्ट, दे आर रिलीजियस पर से. लेट मी शो यू फ्यू मोर statements by scientists which I came across in my research. John Polkinghorne, a particle physicist in Cambridge, he was also knighted by British Queen for his scientific accomplishments. जैसे यहाँ पे होता है ना पद्मश्री या पद्म भूषण मिलता है, तो वैसे वहाँ पे नाइट की उपाधि दी जाती है ब्रिटेन में. इनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, can a scientist pray? So he was asked in an interview, can a scientist pray? He replied, can a scientist pray is a question, of course, that one asks oneself, and I am a scientist and I do pray. And we have always known, I think, as surely as we know anything, that we are not automations. कह रहा है कि हम life जो हम लोग जो human being है, we are not automation, we are not simply chemicals. That we have powers of choice, क्योंकि हमारे पास power of choice है कि नहीं? It seems to me that it is perfectly consistent, logically coherent, that God can act within the openness of that physical world as well. मतलब कोई भी contradiction नहीं है science और spirituality में, according to John Polkinghorne. Max Born was a German physicist, आप लोग सब जानते होंगे, physicist and mathematician. He made immense contribution in quantum mechanics, relativity, chemical physics and optics. He used to say science cannot replace spirituality. साइंस का अपना जगह है, स्पिरिचुअलिटी का अपना जगह है. He condemned both religious extreme as well as the scientific absolutism and maintained the domain of metaphysics. उनका स्टेटमेंट है, there are metaphysical problems which cannot be disposed. Metaphysical problems क्या हैं? Morality के problems, morality के questions about life, ये सब metaphysical problems हैं. वो कह रहे हैं कि इनको dispose नहीं किया जा सकता by saying that they are meaningless.
मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कह रहे हो अरे ये सब मीनिंगलेस क्वेश्चन है, ये सब में टाइम वेस्ट मत करो, केवल उतना ही पढ़ो जिसमें कि जॉब लग जाए, बस इतना ही पढ़ना है कि नहीं? For as I have repeatedly said, they are beyond physics. They cannot be understood by physics. Indeed, and therefore that is why we need spirituality, spiritual knowledge, spiritual practices. Indeed, and demand an act of faith. We have to accept this fact to be honest. There are two objectionable type of beliefs. Those who believe the incredible and those who believe that belief must be discarded and replaced by scientific method. मतलब ये कह रहे हैं कि those who believe कि ये faith, spirituality में faith है, इसको discard कर देना चाहिए और scientific method से हम solve करेंगे life के questions. This is objectionable according to Max Born. Dr. Stephen Barr is an American physicist and the author of several well-known books. He teaches at the Department of Physics and Astronomy at the University of Delaware. Barr does research in theoretical particle physics and cosmology. His book Modern Physics and Ancient Faith, उन्होंने book लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं. Modern Physics and Ancient Faith deals significantly with quantum physics and its interdisciplinary implications. To the question, does quantum mechanics make it easier to believe in God? So Barr's answer is straightforward: no, not in any direct way. It doesn't provide an argument for existence of God, but it does so indirectly by providing an argument against materialism. तो गॉड को साइंस से नहीं समझा जा सकता. दैट इज अ फैक्ट, दैट इज व्हाट ही सेड कि साइंस, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि एथिज्म इज नॉट ट्रू. इसलिए उसने कहा कि इट डजंट प्रोवाइड एन आर्गुमेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बट इट डज सो इनडायरेक्टली बाय प्रोवाइडिंग एन आर्गुमेंट अगेंस्ट मटेरियलिज्म, कि केवल मैटर ही एग्जिस्ट करता है, मैटर के बियॉन्ड कुछ नहीं है, आइदर सोल और गॉड और एनी स्पिरिचुअल थिंग, व्हिच इज द मेन इंटेलेक्चुअल ओपोनेंट ऑफ बिलीफ इन गॉड इन टुडेज वर्ल्ड. There are a lot of statements. I will share this. आप लोगों में जो भी इंटरेस्टेड है आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और इसमें बहुत सारे आपको इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी. इसमें लिंक्स भी हैं, मैंने कलेक्ट किया हुआ है और उन लिंक्स को जाके आप खुद से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, है ना. So similarly, there are many scientists, there are many people, है ना, who does believe in God and therefore science and spirituality are not contradictory, rather एक दूसरे को complement करते हैं. Ramanujan, an equation for me has no meaning unless it expresses a thought of God. Alan Watts. To the philosophers of India, however, relativity is no new discovery. Just as the concept of light years is no matter for astonishment to people who you are used to thinking of times in millions of kalpas. जो कल्पों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है रिलेटिविटी को समझने में, लाइट ईयर का कंसेप्ट समझने में. The movement of stars, which was calculated by Hindus 4,500 years ago, does not differ even by a minute from the tables which we are using today. So what is the point? The point is that we cannot simply say कि जो लोग पहले के जो लोग थे वो अनपढ़ थे, गंवार थे, उनको कुछ पता नहीं था साइंस के बारे में, इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं थे. आज के टाइम में ही सारे इंटेलेक्चुअल्स पैदा हो रहे हैं, है कि नहीं, और इसीलिए उनको जब समझ में नहीं आया कि ये सब कैसे हो रहा है तो उन्होंने जस्ट ऐसे ही बोल दिया कि गॉड एग्जिस्ट, गॉड ने किया है कि नहीं. सो वी कैन नॉट से लाइक दैट. प्रूफ ऑफ एडवांस एंशिएंट सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन वैदिक टेक्स्ट. आप जानते हैं वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टेम्पल कहाँ एग्जिस्ट करता है? एंशिएंट टेम्पल, दैट इज अंकोर वाट, दैट इज टेम्पल ऑफ लॉर्ड विष्णु. Angkor Wat is often described as the world's largest religious monument. National Geographic has conducted an extensive research. In fact, National Geographic का documentary भी है, मैंने embed किया हुआ है इसके अंदर, ये documentary है. आप लोग, मैं PPT भेज दूंगा, आप देखिएगा. And was also released in a full length. तो ये documentary जो है, इसमें ये बता रहा है व्यक्ति, इन्होंने पहले अंकोर वाट को समझने का प्रयास किया. उनको लगा जस्ट एक टेम्पल है ये, इसको स्टडी करेंगे. जब उन्होंने स्टडी करना शुरू किया तो उनको पता चला कि ये केवल एक टेम्पल नहीं है, ये मेन टेम्पल है और इसके अराउंड क्लस्टर्स ऑफ स्मॉल टेम्पल्स क्रिएट किए गए. और जब उसको स्टडी करने लगे
तो इनको पता चला कि एक्चुअली में ये टेम्पल्स का क्लस्टर नहीं है केवल, ये पूरा सिटी है। और सिटी ही नहीं है, इट इज अ वेरी वेल प्लान्ड सिटी विथ ड्रेनेज सिस्टम, with all types of facilities, transportation system, connectivity and facility. This is ancient temple. Try to understand. If you're on the ground, तो ग्राउंड से देख रहे थे जब, तो इनको पता नहीं चल रहा था, तो इन्होंने क्या किया, हेलीकॉप्टर से मुआयना किया उसका पूरा, एंड दे यूज अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड लेजर टोपोग्राफी। लेजर टोपोग्राफी क्या होता है? लेजर बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के होते हैं, आप लोगों को पता होगा। कई कुछ ऐसे फ्रीक्वेंसीज होते हैं जो कि अगर आप, जैसे आप मान लीजिए कि कोई जमीन है और जमीन के ऊपर पेड़ उगे हुए हैं, और आप ऊपर से लाइट फेंकते हो तो लाइट पेड़ से बाउंस होके वापस आ जाएगा, जमीन तक पहुंचेगा ही नहीं। पर कई ऐसे लेजर लाइट्स होते हैं, कई ऐसे फ्रीक्वेंसीज के लाइट हैं जो कि पत्तों को पेनिट्रेट कर सकते हैं और जमीन से बाउंस होके आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड लेजर टोपोग्राफी। आप इसको देखिएगा, आपको डिटेल में पता चलेगा, ये पूरा डॉक्यूमेंट्री है। So they did हेलीकॉप्टर से they did लेजर टोपोग्राफी, और लेजर टोपोग्राफी के बेसिस पे उन्होंने एक मैप बनाया सिटी का। और वो जो सिटी का मैप है वो इतना वेल प्लान्ड है, इतना स्ट्रक्चर्ड है कि दे आर अमेज्ड टू सी कि इतना वेल प्लान्ड, इतना अमेजिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाया पहले लोगों ने। एंड वी आर सेइंग दैट दे वर फूल्स, दे डिडंट न्यू साइंस, दे डिडंट न्यू सिविल इंजीनियरिंग, और बस ऐसी कल्पना कर दिया बैठ के, है ना, कि भगवान है, सोल है। you really can't see what's what. You really have to get up in the air and get. This is the temple. This is the main premise of the Vishnu. This is Vishnu temple, Angkor Wat. Overview, a broader perspective on the landscape. अगर उनको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में नहीं पता था तो ये कैसे कंस्ट्रक्ट किया उन्होंने? ये क्वेश्चन है ना, this question is very valid question actually. Why we are not asking this question? New technologies are allowing Damien to trace urban boundaries and landmarks like never before. Lasers mounted on the helicopter can cut through the jungle to detect topographical details hidden beneath. For the first time, Damien is able to map the full reach of this ancient megacity. तो उनको पता चला एक्चुअली ये एंशिएंट मेगा सिटी है, मतलब सिटी भी नहीं है छोटा, मेगा सिटी है एक्चुअली में पूरा। ये देखिए, It was an absolute revelation. It was really remarkable. The maps show the area of Angkor. तो आप इसको देख लीजिएगा, मैं पीपीटी दे दूंगा। So point is that there is lot which we should consider before finalizing कि हाँ, we are certain that God doesn't exist or spirituality is not true. Similarly, Dwarka, there are people. There was a professor, researcher, Dr. S.R. Rao. He used to study about Dwarka और महाभारत। उनको पता था कि द्वारका एक सिटी था जो कि सबमर्ज हो गया था ओशन में। तो जब वो बड़े हुए, he became a scientist and he went to find out कि अगर सबमर्ज हो गया तो उसके एविडेंस हो गए ना अंदर। और आप इनके लाइफ के बारे में, अभी तो ये है नहीं, बट इनकी बेटी है, वो भी साइंटिस्ट है, उनका एक वीडियो है, मैं देख रहा था, तो वो बता रही है जब वो छोटी थी तो वो देख रही थी कि उनके फादर कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बता रही थी कि उस टाइम पे मैरीन आर्कियोलॉजी करके कोई ब्रांच नहीं होता था, कि समुद्र के अंदर आर्कियोलॉजी, क्योंकि समुद्र के अंदर जाके आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज करने हैं तो 2 स्किल्स चाहिए, एक तो आर्कियोलॉजिकल स्किल्स एंड टूल्स, एंड सेकंड मरीन स्किल्स एंड टूल्स। तो वो बता रहे थे कि डॉक्टर S.R. राव वो इतने ज्यादा कन्विंस थे कि उन्होंने खुद से मरीन आर्कियोलॉजी फील्ड शुरू करके ट्रेन किया लोगों को, और उनको फिर नीचे भेजा, एंड अमेजिंगली दे डिस्कवर्ड द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका। सो दीज थिंग्स आर नॉट माइथोलॉजी, ओनली थिंग इज दैट कि लॉट ऑफ रिसर्चेस नीड्स टू बी डन। वो रिसर्चेस हम नहीं कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति ने इतना मेहनत किया तब जाके एक चीज पता चली कि हाँ, द्वारका सिटी एग्जिस्ट करता था। इसके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री है, आप डिटेल में देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। और उन्होंने मैच किया, वहां पे कई ऐसे करेंसीज मिले हैं, मुद्राएं मिली हैं, जो कि महाभारत में डिटेल बताया गया है कि कैसे द्वारका के जो सिटीजन्स थे वो किस तरीके का करेंसी होल्ड करते थे। सेम शेप है, सेम सिंबल्स हैं, सब कुछ मिला है, पूरा का पूरा सिटी मिला है उनको समुद्र के अंदर। तो हम कैसे कह सकते हैं कि दीज थिंग्स आर माइथोलॉजी, है ना, फॉर डेफिनेटली। Then this is a article written by Rick Briggs, a research scientist at NASA.
And he says, this is the exact article, आप खुद ही पढ़ सकते हो, ये रिसर्च मैगजीन है, AI मैगजीन, वॉल्यूम 6 नंबर 1 1985 में छपा था ये, और टॉपिक है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन संस्कृत एंड आर्टिफिशियल लैंग्वेज इंटेलिजेंस, रिक ब्रिक्स, NASA Ames Research Center. In his abstract of this research paper, he writes, understandably, there is a widespread belief that natural languages are unsuitable for the transmission of many ideas that artificial language can render. Artificial language means C, C++, Java. These are artificial created language. And there are natural languages, जो कि हम बोलते हैं, जैसे English, संस्कृत. तो पहले ऐसा ये बता रहे हैं कि लोग ऐसा सोचते हैं कि जो natural languages हैं, उसको यूज नहीं किया जा सकता कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए, वो सुइटेबल नहीं है, इतना रिफाइंड नहीं है, इसलिए आर्टिफिशियल लैंग्वेज क्रिएट करने की जरूरत पड़. सो ही सेज देयर इज एटलीस्ट वन लैंग्वेज, संस्कृत, which for the duration of almost 1000 years was a living spoken language with a considerable literature of its own. वो कह रहे हैं कि एक लैंग्वेज ऐसा है जो कि इतना रिफाइंड है कि उससे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी यूज किया जा सकता है, बट इस पे रिसर्च नहीं हुआ इतना ज्यादा. Spoken, besides works of literary value, there was a long philosophical and grammatical tradition that has continued to exist with undiminished vigor until the present century. Among the accomplishments of the grammarians can be reckoned a method of paraphrasing Sanskrit in a manner that is identical not only in essence but in form of current work in artificial intelligence. संस्कृत का ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है, वो आज के टाइम पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो रिसर्चेस हो रही हैं, जो लैंग्वेज बनाया जा रहा है, वो सिमिलर स्ट्रक्चर है. दिस आर्टिकल डेमोन्स्ट्रेट्स दैट अ नेचुरल लैंग्वेज, संस्कृत, can serve as an artificial language also, and that much work in AI has been reinventing a wheel millennia old. मतलब वो बता रहे हैं कि नए नए लैंग्वेजेस हम बना रहे हैं, we are reinventing the wheel. मतलब पहले से बना हुआ है, उसको यूज करने की बजाय, उस पर रिसर्च करने की बजाय हम रीइन्वेंट कर रहे हैं व्हील को एक्चुअली. World leaders on meditation, Bill Gates. Meditation is simply exercise for the mind, similar to the way we exercise for muscles. So point ये है कि जिन लोगों ने मेडिटेशन का कंसेप्ट दिया है, वो जानते थे कि माइंड को भी एक्सरसाइज करने की आवश्यकता होती है. बॉडी के एक्सरसाइजेस जो बताता है करने के लिए, उसको बॉडी के फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में इतना पता होता है. आप समझो कि जो व्यक्ति जिन लोगों ने, जिन सेजेस ने मेडिटेशन का कंसेप्ट दिया है, उनको माइंड और साइकोलॉजी के बारे में कितना नॉलेज हो. सो वी कैन नॉट से दैट कि वो सब अनपढ़ लोग थे, उनको कुछ पता नहीं था, उन्होंने जस्ट. सो इफ व्हेन दे आर सेइंग कि गॉड इज देयर और स्पिरिचुअल थिंग्स आर देयर, सो एटलीस्ट मिनिमम थिंग वी कैन डू इज वी शुड रिसर्च ऑन दैट, वी शुड स्टडी. वी कैन नॉट जस्ट सिंपली से कि नहीं दिस इज जस्ट ब्लाइंड फेथ. And at least we should give some time to study and research. Steve Jobs, if you just sit and observe, you will see how restless your mind is. If you try to calm it, it only makes it worse. But over time, it does calm, and when it does, there's room to hear more subtle things. मतलब he's telling about कि meditation से क्या benefit होता है. Similarly, there are lots of people who are talking about meditation, and there are businesses. Yoga and meditation has become a good commercial product. Relaxation app in 2019 raised $88 million, and now it values $1 billion industry. Similarly, Headspace, it started in 2010. App downloaded over 62 million times. Recently, it raised $93 million in equity and debt. Similarly, there are many such commercial projects based on yoga and meditation, and many others. There are several businesses, startups that are beginning to make their mark and a lot of money by providing meditation and spiritual counseling and guidance as a service. 2017, $320 million, 2018, $150 million. If it works, then how you can say it is blind? How one can say that it is blind faith if someone is believing in spirituality? If it works, this is the question. Modern India, what we must do. This is a book, very interesting book. I was reading 2 years back.
this book was written by a Christian missionary who came to India for preaching Christianity. I found a very interesting thing in one of his chapter. He said, Robert Wilder, he said, when he came to India, he brought with him Bhagavad Gita. इंडिया में आने से, अमेरिकन था ये, और इंडिया में आने से पहले बताता है कि भगवद गीता के ऊपर बहुत रिसर्च किया इसने और भगवद गीता पे नोट्स बनाया. वो नोट्स भी और भगवद गीता दोनों लेके आया था यहाँ पे. क्यों? क्योंकि ये जानता था मैं इंडिया में जा रहा हूँ और वहां पे प्रीचिंग अगर करना है मुझे तो भगवद गीता के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो डिबेट में कैसे हराऊंगा. पर आपको मैं पढ़ाता हूँ ये क्या लिखते हैं अपनी बुक में. ये स्नैपशॉट है. एक्चुअली ये बुक ई बुक फॉर्मेट में नहीं है, ये स्कैन्ड वर्जन है क्योंकि बहुत पुराना बुक है. तो मैंने स्नैपशॉट डाला है. टू माई सरप्राइज, few students whom I have known have even a rudimentary knowledge of their sacred language. सबसे पहला सरप्राइज तो ये लगा, उन्होंने बोला कि जो स्टूडेंट्स को मैं जानता था उसमें से बहुत कम ही लोग थे ऐसे जो संस्कृत जानते. सबसे पहले तो sacred language. My hand illuminated text of Bhagavad Gita gathered dust on the shelf where it lay. मतलब ये जो भगवद गीता लेके आए थे अमेरिका से, मार्क करके, बुक मार्क करके, हाईलाइट करके, नोट्स बना के, वो बता रहे कि वो धूल खा रहा था मेरे रैक के ऊपर, उसको निकालने की जरूरत ही नहीं हुई. क्यों? Imagine my surprise to hear a college student say, we cannot talk with you about Hinduism until we have studied. आप भगवद गीता के बारे में हम तब बात करेंगे जब हमने पढ़ा है. So he said, I did not wasted my precious time teaching him about Hinduism, but I preached Christ. तो मैंने उसको अपना आइडियोलॉजी बताया सीधा, है ना. फिर भगवद गीता को डिस्कस करने का फायदा ही क्या. पॉइंट ये नहीं कि he is preaching about Jesus Christ. That's good. That's okay. It's fine. My point is that कि we ourselves are not studying our literatures, जो कि बाहर के लोग पढ़ रहे हैं. नील्स बोर पढ़ रहे हैं, है कि नहीं, स्क्रॉडिंगर पढ़ रहा है, और कमर्शियल लोग भी पढ़ रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग कमर्शियल बेनिफिट ऑल्सो. केवल हम ही सोच रहे हैं कि ये मैथोलॉजी है और ये जो है रेलेवेंट नहीं. सो एक्चुअली yes, and these are some book recommendations. और भी बहुत सारे स्लाइड्स थे, मैंने आपको बताया था 107 स्लाइड्स एक्चुअली पीपीटी. मैंने सारा नहीं दिखाया क्योंकि टाइम नहीं है, पर आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं जिनको अगर इंट्रीगिंग लगा ये टॉक. सो आई वुड रिकमेंड यू टू रीड दिस बुक्स. Science and Spiritual Practices by Rupert Sheldrake. Second book is The Island of Knowledge written by physicist Marcelo Gleiser. Then there is this very interesting book जो मैं दिखाना चाहता था but मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को. The Accidental Universe. It is written by a professor of Harvard University, Alan Lightman. पूरी यूनिवर्सिटी में अकेला ये प्रोफेसर है एलन लाइटमैन, जो कि फिजिक्स भी पढ़ाता है और फिलॉसफी भी पढ़ाता है. मतलब 2 डिफरेंट ब्रांचेस हैं टोटल, दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ाता है. एंड वेरी इंटरेस्टिंग बुक. ही इज नॉट रिलीजियस बाय द वे, बट ही is not atheist also. He is not denying that there is a possibility of spirituality. So then there are these books. Thank you for being late, An Optimist's Guide to Thriving in the Age of Acceleration. जो मैंने concept आपको बताया ना कि knowledge बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, लेकिन हमारा नॉलेज उनके बारे में, उनसे कैसे डील करना है, ये नहीं बढ़ रहा है. वो इस बुक से मैंने पढ़ा था. दिस बुक आई रेड 3-4 years बैक, बट वेरी इंटरेस्टिंग बुक इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि आज के टाइम पे किस पेस से चीजें चल रही हैं और किस फील्ड में क्या ग्रोथ हो रहा है. तो आपके करियर के लिए भी बहुत अच्छा है. इनफैक्ट दिस बुक बहुत मोटा बुक है वैसे, बट आप एटलीस्ट कुछ रेलेवेंट चैप्टर्स पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो. Then there is John C. Lennox. He's a professor of mathematics in Oxford University. He has written a book called God's Undertaker. Has Science Buried God? And then there is book by Richard L. Thompson, God and Science. Then there is this book, Searching for Vedic India, Devamrit Swami. He's also a researcher and he's also a sannyasi. So you can read this book also. Very logically and very scientifically it has been written. There is much to say, but time is limited. And I would like to thank you all. I can take few questions. And I would like to thank you all for giving your precious time to discuss about these topics, which is rarely discussed nowadays.
And because these things are rarely discussed, therefore there is so much confusion around it. अगर किसी टॉपिक के बारे में इतना कंफ्यूजन है, उस पर लड़ाई हो रहा है, तो उसको ज्यादा पढ़ना चाहिए ना, या कि उसको नेग्लेक्ट करना चाहिए. But you will see these topics are neglected. People need to know what spirituality is so that they can make informed decision. Problem with today's time is that due to glamour, wrong things are glamorized. आप देखो, those एक honest policeman है, ठीक है ना, एक व्यक्ति है जो कि honest policeman है, और एक व्यक्ति है जो कि honest policeman का डायलॉग बोल रहा है, एक्टर जिसको कहते हैं, ठीक है ना. एक ऑनेस्ट पुलिसमैन है और एक ऑनेस्ट पुलिसमैन का एक्टिंग कर रहा है, डायलॉग बोल रहा है. कौन ज्यादा फेमस है? कौन ज्यादा फेमस है? जो डायलॉग बोल रहा है ऑनेस्ट पुलिसमैन का, है कि नहीं? व्हाई? क्योंकि ऑनेस्ट पुलिसमैन बनना या कोई भी, ये टफ है बहुत, उसमें ग्लैमर नहीं है. आप वो ऑनेस्ट पुलिसमैन जब चलता है ना, वैसे तो कैमरा में दिखाया जाता है हीरो जब चल रहा है तो हवाएं चलने लग रही हैं, है कि नहीं, पत्ते पेड़ हिल रहे हैं, है कि नहीं, धूल उड़ रहा है, जैसे ही पांव रखता है तो धम आवाज आता है और धूल उड़ता है कि नहीं. जब ऑनेस्ट पुलिसमैन एक्चुअली चलता है तो ऐसा कुछ नहीं होता. दिस इज डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड ग्लैमर, आप समझे? सो दोज पीपल हु आर मोर फेमस, दैट इज व्हाट others would want to become. This is the situation in modern times. Why? Because spiritual knowledge is missing. This is the reason of degradation of this type of degradation. People talk about democracy. Democracy has given power to everyone. Let me ask you a question. Facebook पे अगर आप कोई पोस्ट डालते हो, suppose on the topic of science, okay, now there is a scientist who comes across your post और उसको अच्छा लगता है, ठीक है ना, अच्छा लगता है उसको, और वो लाइक करता है. कितना लाइक कर सकता है वो? एक लाइक कर सकता है. जैसे एक व्यक्ति के पास कितना वोट होता है डेमोक्रेसी में, एक सिंगल वोट होता है, उसी तरीके से एक लाइक है. दिस डेमोक्रेटिक कंसेप्ट, इक्वल कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, सो कॉल्ड इक्वालिटी. मैं आपको बताता हूं क्या दिक्कत क्या है इसमें. उसके बाद मान लीजिए कि वो जो पोस्ट है जो आपने साइंस के ऊपर लिखा है, वो आप कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स देखते हैं, उसको 15-20 कॉलेज स्टूडेंट्स देखते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, एंड दे राइट नेगेटिव कमेंट्स इन इट एंड दे डिसलाइक इट. सपोज 15 people dislike it, or you can take a video also, YouTube video or whatever, and one scientist have liked it. Now you tell me, according to democracy, who will win? Majority will win. Majority wins. It means that it will be cumulatively it will be decided that your post is not scientific. But common sense क्या कहता है? Common sense ये कहता है कि अगर साइंटिस्ट ने लाइक किया, साइंटिस्ट का एक लाइक नॉर्मल ले पर्सन के लाख डिसलाइक से ज्यादा बड़ा होना चाहिए. Isn't it? Is there anything wrong in this statement? Similarly with vote also. But everyone has equal power. I'm not criticizing democracy. I am saying that there is much to learn and modify. I'm just telling you that modern civilization, the way things are going on, we should be very much aware about these topics, these concepts. Otherwise, there is a lot of chance to become prejudiced about these things. There is a lot of chance to become biased in these, especially in topics related to spirituality, you know? So like that, there is a lot to discuss, say, but let us stop here. Thank you. So questions, yes, if someone wants to ask any questions. So what is the procedure? Yes, we can take some questions. How? First of all, I'd just like to thank you for this amazing session. Thank you for clearing so much of our doubts and talking on the neglected topics, as you were saying. वही topics जो bookshelf में रह के bookshelf में भी नहीं होते. Sorry to interrupt you. How will they ask new understanding altogether? Something. How will they ask question? So they can raise their hands and then we can allow them to unmute.
that way. So we have Ruchita Saukari who has a question. You can also write in chat if you. Till the time one is asking. Okay, one question is already there. Why there is no mercy on animals if God's justice is equal for everyone? Yeah, God's asking. justice is for everyone, but you also have been given some power. अब आपको अगर चाकू दिया गया है, फ्री विल दिया गया है, आप उससे किसी की जान बचाते हो या किसी को मारते हो, ये तो आपके हाथ में है ना. So it's not that God is there, but he has also given free will to us. So we are also there in this universe, and so we have to take responsibility. है कि नहीं? We have to take responsibility for our deeds. अगर हमें free will नहीं दिया जाएगा, हर चीज God ही करेंगे, तो we are just like machines, which is not true. We are not machines. We have free will. So with free will comes responsibility. है कि नहीं? So it is due to our ignorance these things are happening. It's not about, you cannot say that God is not doing. If you have a question, how we can balance our study and spirituality? Just suppose you go with your friend, है कि नहीं, for dinner. So when you are taking your dinner, you are also eating, nourishing your body, as well as your relationship is also enhancing. Is there any contradiction in that? We can do two things simultaneously. Just you have to devote, fix. The key word is planning. You have to plan your time. You have to manage your time. These skills you should learn. Very useful. These are very useful skills. Skills of time management and strategic planning. So you should plan your tasks, your priorities, and you should allocate it proper time to do things. So this is how things should go on. That is how you can balance it. होता क्या है, जो हमें ज्यादा अच्छा लगता है जिस टाइम पे, उसमें हम बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं, है कि नहीं? So this creates this balance. Is there a concept of luck? So do you believe in luck? There is concept of there are things which are fixed in our life, but most of the things, I would say 80-90% is in your hand. Actually, the most important thing what we lack is we don't know the right person from whom we can learn something. Mentors. If you want to do something, search for mentors, proper mentors. उसको गुरु बोला गया संस्कृत में, है ना? So in modern times it is called mentors. If you find proper mentor, then we should do things in his or her guidance. So that will solve the problem. Does luck beats hard work? No. देखो, hard work is not sufficient. Hard work तो क्या है, चींटी भी करता है hard work. आप अपने रूम में कभी देखोगे तो एक छोटा सा शुगर का क्यूब ले जाने के लिए इतना मेहनत करते हैं, वो इतना ज्यादा मेहनत करते हैं. हार्ड वर्क इज नॉट सफिशिएंट. एक्चुअली यू हैव टू डू हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन. जैसे मान लीजिए कि आप बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है ना? तो आप तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, आप एडवांस कर रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में? ये भी तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना. हो सकता है गड्ढे में आप बहुत तेजी से जा रहे हैं गड्ढे की तरफ, है कि नहीं? सो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. And after you have got right direction, then hard work. जैसे आपको अगर दिल्ली में हैं आप और आपको इंडिया गेट जाना है, तो सबसे पहले आप डायरेक्शन देखोगे. ये नहीं कि आप सबसे बेस्ट गाड़ी आपने लिया, सबसे लग्जरियस गाड़ी लिया और तेजी से भगा रहे हैं आप, पर आपने ये देखा ही नहीं कि किस डायरेक्शन में जाना है. So it doesn't work. And that is where role of mentor comes into picture. Those who don't have mentors in their life, they do hard work in wrong direction. And then they don't get result, and then they say that it was luck. आप lucky थे इसलिए आप successful हुए. Otherwise hard work तो हमने भी किया था. तो आप lucky नहीं थे, आप intelligent थे और इसलिए आपने mentor ढूंढा. आप समझे बात को? Mentors. साइंस और One question is there, what is success according to you? साइंस और ग्रहण के आचार के बीच में क्यों डिबेट होता है?
प्रॉब्लम ये नहीं कि डिबेट होता है, प्रॉब्लम हमें ये है कि डिबेट में जो लोग आते हैं उनका क्या क्वालिफिकेशन है। आप समझे बात को? जो लोग डिबेट कर रहे हैं उनका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है? ना उसको साइंस पता है, ना उसको स्पिरिचुअलिटी पता है, एट दे आर डिबेटिंग, they are just earning some cheap money in the name of astrology and all these things. Actually they don't have spiritual qualities, they are not practitioners, proper practitioners. So therefore इसलिए मैंने आपको बोला कि साइंस जो है वो जर्नलिस्ट से पढ़ रहे हैं हम, स्पिरिचुअलिटी भी जर्नलिस्ट से पढ़ रहे हैं। न्यूज से स्पिरिचुअलिटी मत सीखिए, है ना, स्पिरिचुअलिस्ट से स्पिरिचुअलिटी सीखिए और साइंस सीखिए साइंटिस्ट से। Why there are miseries in this world? If before any Jan we are, why we come here in spiritual world? Why we are, why there are miseries in this world? It's not question of why there are miseries in this world. Those people who are successful in their life, you will never find them कि उनके लाइफ में कभी हार्डशिप नहीं आया, मिजरी नहीं आया। मिजरी आता है हमें बताने के लिए कि हमें कुछ ऐसी चीजें जो हमें नहीं पता है, हमने डेवलप नहीं किए, एंड वी शुड डेवलप इट, वी शुड नो इट। दैट इज व्हाई मिजरीज कम, है ना। सो मिजरीज आर वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एक्चुअली, इन फैक्ट वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो वी शुड नॉट अवॉइड मिजरीज इन लाइफ, रादर चूज those sets of miseries which is meaningful for you. You cannot avoid miseries of life, it is not possible. What we can do is choose the miseries, set of miseries which is meaningful. We are searching for meaning in life, we are not actually those who are passionate, those who love what they do, they like to take more miseries, they like to take more hardships. दूसरों को लगता है अरे ये मिजरी है, लेकिन उसको मिजरी नहीं लग रहा होता, उसको अच्छा लग रहा होता है। और कई लोग हैं रिसर्च, साइंस में रिसर्च करते हैं, 18-18 घंटे खाना नहीं खाते। मुझे याद है मैं जब बहुत छोटा था, मेरे मामा जी हैं, वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर कॉलेज में, एंड ही ऑल्सो यूज टू गिव यूपीएससी कोचिंग। तो घर में ही कोचिंग देते थे। तो कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जो उनसे पढ़ने आते थे, एंड बाद में जब वो यूपीएससी क्रैक कर लेते थे तो उनके पेरेंट्स आते थे, मतलब उनसे मामा जी से मिलने के लिए, उनको थैंक कहने के लिए। तो मैं बहुत छोटा था, मैं सुनता था वो क्या कहते हैं। और तो एक ऐसी एक गर्ल थी, वो यूपीएससी क्रैक किया उन्होंने, तो उनके पेरेंट्स आए थे मिलने के लिए, तो बातें कर रहे थे, तो मैं सुन रहा था। तो वो बता रही थी कि ये पढ़ाई में इतना ज्यादा खो जाती थी कि 18-18 घंटे पढ़ती थी, ना खाने का होश रहता था, ना कुछ होश रहता था, मुझे 3 बार बोलना पड़ता था खाना खाने के लिए। आप समझ रहे हैं बात को? तो नॉर्मल व्यक्ति को लगेगा अरे ये हार्डशिप है, मिजरी है, बट जो कर रहा है उसको मिजरी नहीं लगता है। और आपको लग रहा है ऐसा कि वो मिजरी है, आपको मिजरी नहीं सहना पड़ेगा, आप बहुत बड़े इल्यूजन में। एक्चुअली you cannot avoid miseries, only thing is that you can choose which misery is meaningful, choose the meaningful one, do not try to avoid it, it is an integral part of life. What is success according to you? The very first definition of success is, before defining success can mean different things to different people externally. But what I can tell you is, if you want to succeed in life, then the very first thing we should do is to understand and study about life, what is life, from various perspectives. After you have taken into consideration all angles and perspectives, then you define what is success for you. In modern times, or those who are not hearing from different perspectives, and they define success, so that ends up becoming just one aspect of life. They मतलब proper पूरा एक spectrum cover नहीं हो पाता life का, and therefore they do not lead a satisfied life, है ना? So like that. Sir, I guess it is time. Can we? We normally ignore the negative feedbacks. So why to consider them who don't believe in God? Just them live as they are. We ignore. No, I would not say that is negative. That is not negative. They don't believe in God. My point is that if you are studying
in your school or colleges, and if you are studying about atheism, then you should also be taught about theism. That's all. And by applying your own intelligence, you should choose which direction you want to research more on. प्रॉब्लम ये नहीं है कि एथिज्म, प्रॉब्लम ये है कि दोनों साइड्स की बातें बराबर तरीके से रखी नहीं जा रही. एक ही साइड से आवाज आ रहा है केवल हर जगह पे, चाहे वो मूवी बन रहा हो, चाहे वो वेब सीरीज बन रहा हो, कुछ भी चीजें एक ही साइड से केवल आवाज आ रही. क्या भारत में कोई ऐसे साधु, कोई ऐसा सेज नहीं हुआ है जिसकी क्वालिटी, जिसके लाइफ के ऊपर मूवी बनाया जा सके? देयर इज करप्शन. वेयर, इन विच फील्ड देयर इज, कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें करप्शन नहीं है? बताइए मुझे. क्या आईएएस करप्ट नहीं होते? तो क्या करें, यूपीएससी में ताला लगा दें? क्या इंजीनियर्स करप्ट नहीं होते? तो क्या करें, आईआईटी में ताला लगा दें? साधु भी करप्ट होता है, साधु भी करप्ट होता है. लेकिन जिस प्रकार से एक डॉक्टर के करप्ट होने के बावजूद भी मेडिकल फील्ड पे ताला नहीं लगाया जा सकता, और जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनके बारे में भी डिस्कशन होता है. Why same thing is not happening with spirituality? That is our question. We are not saying that कि those who are saying, those who are atheists, we should deride them or like that. No, they should speak actually, but there should be discussion, open discussions, है ना. और आप अगर एथिज्म पढ़ा रहे हो तो दूसरा पक्ष भी पढ़ाओ, उनको पता होना चाहिए. अभी क्या लोग ऐसा सोच रहे हैं कि एथिज्म इज साइंटिफिक थिंकिंग, साइंस मीन्स एथिज्म. ऐसा कैसे बन गया धारणा? क्योंकि दूसरा पक्ष पढ़ा ही नहीं रहे. सो दैट इज व्हाट वी आर अगेंस्ट, है ना. इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्योरीज, ऑफ फिलोसफीज एंड कांसेप्ट शुड बी देयर. दैट्स ऑल. What wrong poors have done that they have to die out hunger? Is God punishing them? No, it's not about what they have done wrong. मैं आपको बताता हूं, there are many people who are, मतलब they are stinking rich. मतलब आप सोच भी नहीं सकते उतना पैसा है उनके पास. And they live like a poor person. They live in jungles by building a cottage, a small cottage. They come to Rishikesh. If you go to Rishikesh, sometimes we can go in camp. I will show you. There are people who are stinking rich and they are living like a poor person. Poverty is not a problem. Poverty is not a problem if it is मतलब कि पैसा ना होना या फैसिलिटीज ना होना प्रॉब्लम नहीं है. आप समझिए बात को. पर बट दैट कोई कह सकता है कि भाई उसके पैसा है, उसने तो पर्सनली चूज किया पुअर होने का, है कि नहीं. पर कई लोगों ने तो चूज नहीं किया है. तो कई लोगों ने चूज नहीं किया है तो हमें हेल्प करना चाहिए उनको. प्रॉब्लम ये है कि मॉडर्न टाइम्स में जिनके पास पैसा है उनको कोई दे आर नॉट बीइंग टॉट कांसेप्ट ऑफ कंपैशन. व्हाई? बिकॉज स्पिरिचुअल एजुकेशन इज नॉट देयर. उनको डिटैचमेंट का कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा है कोई व्यक्ति. Why? Because detached people, those who are spiritualists, they are not meeting with them, they are not hearing from them. How will detachment come? And unless they are detached, they cannot help poor. So this difference between income gap is there, a lot of income gap, wealth gap is there. Why? Because this spiritual education is missing. Those who have more, तो जो spiritualists होते हैं, they convince them to give those who have less, so that equality can be maintained. But as far as poverty as an external symptom is concerned, तो it's not कि किसी के पास पैसा नहीं है या facility नहीं है, तो that is not cause of misery actually. There are many people we know who are stinking rich and they voluntarily they choose to live like this. Why different Puranas depict different God as supreme? No, it's not that कि Puranas depict different God as supreme. It's just idea is that कि Puranas बहुत complex बुक्स हैं, कंसेप्ट्स हैं उसके अंदर. उसको पढ़ने केवल पढ़ने की चीज नहीं है. इट इज ऑल्सो देयर आर थिंग्स विच यू शुड प्रैक्टिस ऑल्सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग. Science is also like that. It's not just about studying science. You also need to practice science in order to understand it deeply. तो ये जो धारणाएं हैं ये ऊपर से पढ़ के कई लोग जो है समझते हैं या फिर प्रपोज करते हैं. ऊपर से पढ़ते हैं ना, उनको कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है. जैसे इसमें एक वीडियो डाला था, मैंने दिखाया नहीं था आपको, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ. ऊपर से अगर आप नॉलेज लेते हो तो कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है.
बट अगर आप डीप में जाओगे ना किसी चीज के, तो बहुत डिटेल्स हैं उसके अंदर, है ना। तो अभी तो सिस्टमैटिकली पुराण और उपनिषद पढ़ाए ही नहीं जा रहे तो ये डिस्कस करने का क्या फायदा कि उसमें क्या लिखा है। आपने सीरियल में देखा होगा या तो, या न्यूज में पढ़ा होगा ज्यादा से ज्यादा, या किसी से सुना होगा जिसको खुद नहीं पता होगा। दिस इज प्रिज्म। प्रिज्म है ये, है ना। प्रिज्म से अगर आप एक सनलाइट का रे पास करते हैं तो प्रिज्म क्या करता है, वो सनलाइट को स्प्लिट कर देता है 7 कलर्स में। तो सनलाइट अगर आप वैसे देखोगे सनलाइट, तो आपको लगेगा क्या ये तो सिंगल स्ट्रेट लाइन है, एक रे ऑफ लाइट है, सिंपल येलो, इट इज जस्ट अ येलो रे ऑफ लाइट, सिंपल, इट्स सिंपल। हर चीज सिंपल लगती है ऊपर से देखने में, लेकिन अगर आप उसको एनालाइज करोगे डीपली, अगर आप उसको प्रिज्म से पास करोगे, तो आपको पता चलेगा ये सिंपल रे ऑफ लाइट नहीं है, उसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। There are different rays, electromagnetic waves which are of different frequencies, और वो कंबाइन होके ऊपर से सिंपली जो है येलो लाइट दिख रहा है। सिमिलरली जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, वो ऊपर से अगर आप पढ़ोगे या सुनोगे तो वो आपको कॉन्ट्रडिक्शन दिखेगा, क्योंकि वो सिंपल अंडरस्टैंडिंग्स हैं, बट स्क्रिप्चर्स हैव वेरी डीप concepts. Why would someone who is intelligent, they will write contradictory things? Okay, so it's not contradictory, but we need to study it more, we need to discuss in detail. ठीक है, आप देखो 1.5 घंटे हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी तो यही डिस्कस कर रहे हैं कि स्क्रिप्चर्स में फेथ रखना चाहिए। अब स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है, ये तो पूरा सब्जेक्ट मैटर है ना, उसको पढ़ने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। 1.5 घंटा यही बताने में चला गया कि स्क्रिप्चर्स पढ़ना चाहिए, अब उसमें क्या लिखा है उसके ऊपर यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए वास्तविकता में, है कि नहीं। तो लाइक दैट। ओके, सो लेट अस स्टॉप हियर क्योंकि टाइम हो गया। थैंक यू ऑल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही हमको डिटेल में बहुत अच्छे से, यू एक्चुअली गिव अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, ऐसा अंडरस्टैंडिंग जो हमको जनरली नहीं मिलता। This understanding that science is actually also based on beliefs, और साइंटिस्ट साइंस के कंधे पर बंदूक रखकर हमको ये बता रहे हैं कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, इट इज ऑल माइथोलॉजी इन दैट सेंस। सो एक्चुअल में ये सर लाइफ स्टार्ट होती है कॉलेज के बाद में, बट क्या होना चाहिए लाइफ में वो हमको बताया नहीं जाता। एंड देन व्हेन वी गेट आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, देन वी आर क्लीन बोल्ड दैट टाइम। So therefore this study about a field of knowledge which educates us about morality, about real life challenges and how these subject matters can actually help us to live a better life, इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। And as you rightly said, 1.5 से 2 घंटे के अंदर तो हम यही चीज सिर्फ सीख पाए, बट बहुत डिटेल में स्टडी चाहिए होगा हमको इस सब के लिए, and that is what we have brought for all of you. This is, as I told, just the beginning, or we have so much more in store for us. We have a plethora of knowledge, ऐसा knowledge जो actual में which can revolutionize your life. So what's in it for you? We have one-to-one mentorship for career and life by industry experts and coaches. We also have free 1-year access to paid life and spirituality courses and chances to win exciting prizes. अब ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो लोग ने अभी फीडबैक फॉर्म भरा है। तुषार, if I can request you, can you please share the feedback form again? तो आप लोग जो feedback form है, and how can we give them slides and documents? Sir, you can give it to me and then we have different groups, so वहाँ पे हम उसको भेज सकते हैं ऐसा करके, that way. हाँ जी, तो हम जो इनके respective coordinators हैं हम उनको भेज देंगे, and that way it can be जहाँ पे हमने भेजा था ना, ये जो registered participants हैं हम उनको सीधा भेज सकते हैं सर links. Okay. Yes sir. So okay, thank you. So should I leave? Yes sir. Thank you very much sir again. I will share the materials with you and you can give. Okay. Thank you. Hare Krishna. Yes. Thank you sir. Hare Krishna. Hare Krishna. And आप सबके लिए अभी है, this was the session 1 of the masterclass series. After that we have session 2 on 29th. It is by Mr. Rambhadra Das, and session 3 on 5th of February by Mr. Amogila Das. तो stay tuned, stay connected, और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा. If we also have a small presentation about Ethicraft Club, which will show you हमारा जो एक क्लब है Ethicraft Club, which is doing this ECC. तो
एथिक्राफ्ट क्लब के अंडर वी डू अ लॉट ऑफ सच थिंग्स. हमारा एक्चुअल पर्पज ही है टू educate, aware, and make people understand and help them in their practical spirituality things. So we are intent on providing people these things, education, support, and the right ambience. How do we do it? We have a vision that every youth grows holistically in various important dimensions in their lives, like personal growth, spirituality, technicality, and professional life as well, which will help us to become a better leader in the society. This is our mission, to solve the root cause in today's society, which is actually due to lack of values and spirituality. So हमारे जो courses होते हैं, it is not only about spirituality. हमारे subsections है. We have 3 societies which are running in LPU. One is about practical spirituality, one is about personal excellence, and the other is Technion, which is about technical stability as well. So ये सब है. And this Ethicraft Club was launched in 2018, Udgar, by the Honorable HRD Minister of India, Shri Prakash Javadekar, in our youth festival, Udgar 2019. So this is what our Prime Minister has to say about Udgar. I hope that Udgar, organized by its Youth Forum, will be an ideal platform for our youth to showcase their talents. And the Deputy Chief Minister of Delhi, he said that Ethicraft Club is launching this de-addiction campaign. This is when we launched this Ethicraft Club. So, personal excellence, spirituality applied, and Technion. These are 3 wings which are there. You can also visit our website ethicraftclub.com, जहाँ पे आपको ये सब चीजों के बारे में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगा. Tushar can also send the link of the group, link of the website on the Zoom chat. So we have our Ethicraft mentors and faculties, जिनसे हमको personal guidance, one-to-one coaching और about spiritual and material life दोनों के बारे में education मिल सकता है. जो लोग ये feedback form भरेंगे और feedback form भरने के बाद you have to do very simple thing. There are 2-3 questions. वो questions का आपको answer करना है. You have to tell कि इस session में आपने क्या सीखा. बहुत अच्छे से आप जितना अच्छे से बताएंगे, some lucky members जिनके answers हमको बहुत अच्छे लगेंगे, they'll get this opportunity. And yes, this is it. Thank you very much for joining today. हम आपसे फिर से मिलते हैं next Sunday, same time. Okay, thank you. Next Saturday, sorry, Saturday. Recording stopped.